Hello. Yeah. Okay. Okay. All of you join the class. Acceptance angle and numerical aperture. Numerical aperture. Aperture derivation. Derivation. Yeah. Join all of you quick. So I'm going to start the derivation. Are you getting my voice clear? Yes, sir. Okay, right. Very good. So you are getting my voice clear. Okay, wait for 5 minutes. More the students will going to join. Then before that, I'm going to draw some structure of optical fiber. Okay, so students will going to join here. I'm going to take out structure. So optical fiber, I have to take out. Okay, this is your optical fiber, core and cladding diagram. Then I will take out blue color. Okay, so this is the optical axis. This is your optical axis. All right, then your light ray will going to enter like this and totally internal reflected. Okay, totally internal reflected. Okay, 21 students are joined. Right. So these will going to extend in both the sides. We will get cone. So this is called a numerical aperture. So this angle is called the theta acceptance angle. Now I have to take out Snell's law for these points. Okay. So this is called 0, this is called A, this is called B, and imagine this light will going to pass here, then we have to say C. Okay. Okay, ask to join more students. Then we will going to start here. So alaikum assalam. Sir, what about Maxwell equation? Maxwell differential. Okay, I'll complete first this. That's why I have started here 8 o'clock. Okay, your choice is in the chapter Maxwell equation and pointing vector. Two questions are there. Okay, we will going to derive the two questions also. Right, clear? So first we will complete this optical fiber and superconductivity and magnetic materials. So 2.5 units we will going to complete. Who want to going to study that to pass out that questions? Then we'll go for the in the table unit means downside fourth unit. You have Maxwell equation pointing vector that we're going to cover. So more than 100% you are going to pass. Okay, 110% you are going to pass. Then I'll cover my what is that? So Schrodinger time independent and particle in a potential box. That two are very important. Definitely one will come. And similarly, what you have that crawling penny model. It's a very important question that also we're going to cover. Okay, that's why I'm taking here from 8 o'clock. So first I'll complete this optical fiber and superconductivity magnetic material. Okay,
Chalo. Okay, right. The 31 students are joined, right? Very nice. So I'll continue these things. Okay. Chalo. So now I have to draw this part. First, we will going to apply the Snell's laws. Okay, there are three parts you observing that. Here you have the air. Here you have the part is air you have. So air, light ray will going to enter from here, air to your core. This is called core, no? This is core. This is your cladding. Clearly, you have to draw this diagram like this in exam. So how drawing the diagram is very important. Today, morning onwards, up to the 6:30, I corrected the Lord's College papers. Everyone drawn proper diagrams. Proper diagrams. Then I given 6 out of 6. So they haven't drawn the diagrams. I given 4, 3, 5 like that. I given that. Then faculty came and asked me, "Sir, why you given 4 marks?" Then I asked, said that they haven't drawn the shortcut effect diagram and like that. So type 1, type 2 superconductor diagram they haven't drawn. That's I taken out some marks. So they agreed. So you also people, you have to draw the compulsory diagrams. I said you that each question you have to draw compulsory one diagram. So diagram is very important. We have very less time to correct it. Okay, online section. So we are not reading what you have written the story. So we are concentrating on equation part and diagrams. Okay, chalo. So here air and your core and when I have to say cladding we have. The cladding core air refractive index is I have taken N naught. Refractive index term is N naught I have taken. In school level we have taken mu, we have taken refractive index. Okay. Core refractive index is N1 and the cladding refractive index is N2. We know that. So there are two mediums we have here, air and core. Then Snell's law we are going to apply. Which law we have to apply? The apply Snell's law. So when you are going to apply Snell's law you have to apply. So we require two mediums. We require two mediums. See that here air you have, core you have. Okay, so at this condition I have to apply. One more condition we have, and the core and cladding, but light ray will not go inside the cladding. It will totally internal reflected. Correct or not? Then what we have to do that condition? We cannot apply here at the point B. Why? Because this is totally internal reflected. That case, we imagine that light ray will pass, just graces the surface. Means B to C it will go. Okay, then we consider that one is here core, another one is cladding, two different medium we have, then we have to apply the Snell's law. Okay, clear? So we'll going to apply first Snell's law, apply the Snell's law. So 0 to A, 0 to A we have to apply first. O to A, 0 not O to A. Okay, apply Snell's law. Snell's law we are saying that what is the refractive index of the air? N naught into what is the angle we are taking here? Theta, no? Theta you take out, I we take out. So here we take out theta, we will take out I, we take out. It's a very good. Why? Because every time theta will not go to repeat. I you will take out. Okay, it's easy for sine I. So what you are taking the angle with sine, that is Snell's law. Okay, is equals to opposite side. Exactly this opposite. This is the one. Can I draw here properly? This part I'm drawing. This part I'm going to draw. So this is your. What is this? This is I'm taking. This is you are taking I. So opposite I'm going to take out. This is the opposite angle. This is the opposite angle we have to take out. This is I consider as a theta. So opposite angle this here theta I'm going to consider. Theta I'm going to consider. I opposite we have theta. I opposite we have theta. So inside where is the theta you have? Inside the core. Core refractive index is N1. Then I'm writing N1 sine theta. Okay, right, chalo. So N1 is air refractive index is always 1. Okay. So N1 sine theta, how we are writing in terms of cos theta? Sine square theta plus cos square theta is equals to 1. So what you have to write? Sine theta you need. Sine square theta is equals to 1 minus cos square theta. And so sine theta is equals to square at that side will go. We will get here 1 root you will get here. Now I'm writing in terms of in place of sine theta.
Sin theta only, I'm writing 1 minus cos square theta, but because I have to use in future, so this equation, that's why I'm going to use. So n naught sin I is equals to n1 under root of cos square theta. If you will get this question, you'll get 100% marks. No need to write more about theory here. You have to write one or two lines here. Let us consider the light ray will go to enter from O to A. So this is enter inside the core from a cladding surface. It is going to totally internal reflected. Core refractive index is n1, air refractive index is n0, cladding refractive index is n2. So it making angle with I, that is called glancing angle. We are going to extend the both the sides of this I. We'll get here NA. Like that, you have to create your own words, the theory part, and you have to write down. Okay, clear? So that is a very easy for you that you are creating the sentences. Okay, chalo. I applied here, we will get here. Then apply the Snell's law. Apply Snell's law. Apply Snell's law at B. Why at B only? Means, so in total internal reflection, it is moving inside the core only. But according to Snell's law, we need two medium. That's why one is core, one is cladding. Then you have to imagine that light ray will going to pass at the surface. Then we have to say this light ray will pass at the surface. Then I'm saying that this is the pass at surface. So this surface, I'm considering BC. This is the B, this is the C. Okay. So then starting angle here, angle I consider as a phi angle I consider. So here the angle, you're not getting, you're not going to zoom. That's why I have shown here. So this angle is phi I consider. Means I'm writing here the Snell's law. So N1 is the core refractive index, sine theta sine psi. So phi is equals to sine phi is equals to opposite side. Opposite side, what do you have? Exactly 90 degrees. See that? Exactly 90 degrees. So that is cladding refractive index is N2 sine 90 degrees. Sine 90 degrees. Okay, sine 90 value is 1. You know that. N1 sine phi is equals to, this is nothing but critical angle only. So I'll put it suffix C, but you're going to confuse. I'm not placing here. Into 1 bracket 1. Okay. So n into 1 means n only, n2 only. So then I'm writing sine phi is equals to sine phi is equals to sine phi is equals to n2 by n1 we will get here. N2 by n1 you will get here. But I need the equation in the form of theta. Then what you have to do, sir? You carefully observe these things. So this is the angle is 5. So this is your 90 degrees, correct or not? This is 90 degrees. The remaining angle you have, this is called 90 minus theta. So opposite angles are equal. Can I write it here? Phi is equals to opposite angle means 90 minus theta. From the diagram from here, this diagram I have taken here. This diagram I have taken here. This diagram. So opposite is 5 you have, opposite is 90 minus theta you have. Then 5 in place of 5, I have to write down 90 minus theta. Sine 90 minus theta, I will get here n2 by n1. That is called here. So 90 minus theta is cos theta. Cos theta, I will get here n2 by n1. So this is equation number. Substitute in equation number 2 in equation number. Substitute equation number 2 in 1. 2 in 1 equation you have to substitute. Okay, getting or not? Okay, right. So everyone getting, I think. Okay. So uh, so so substitute. Then I'll get here and not value is 1 always. If you are keeping or you are not keeping, not a problem. So and not. So sine I is equals to sine I is equals to, so n1 under root of, so 1 minus n1 under root of cos theta value is n2 by n1. I have to place out here n2 by n1 whole square. So separate you do it and take LCM. Then you will get here, I'm getting like this. So under root of 1 minus n2 square by n1 square. N1 square minus n1 square. Correct or not? Separate I'm taking. That root is for total 1. I am going to separate root also. N1 2 square, n1 square is LCM, n1 square into 1 into n1 square you will get. So separate I'm going to take out root. Then I will get here sin I is equals to, so n1 into separate of this n1 square minus n2 square root
by under root of n1 square. Square and the root will going to cancel out here. Then remaining you will get here n1 only. Then I'm going to cancel out this n1 and n1 you will going to cancel out. Then what you are getting sin I? Sin I is equals to so under root of n1 square minus n2 square by n naught. So what you need? I only you need. I is equals to sine inverse of so under root of n1 square minus n2 square by n naught. Chalo, you got a I value, that is only acceptance angle. You got or not? So then, so numerical aperture is nothing but sine of I. Sine of I. Then I'm writing numerical aperture is equals to sine of I. NA is equals to sine of I. So I value I got. Then NA is equals to, I substitute sine inverse of under root of n1 square minus n2 square by n naught. Sine inverse sine will going to cancel out. Numerical aperture is equals to so n1 square minus n2 square by n naught. Definitely you lost the numerical from here. Okay, you lost the numerical from here. Definitely you will get the marks. Right? Very easy numerical he will ask. He will give you n1 value, refractive index of the core, n2 is the refractive index of the cladding, n0 is refractive index of the air. Air refractive index is always 1. No need to give that. If you use other than 1, 1.02, 1.1, substitute that. If you will not give, we will consider n0 value is 1. Okay. So this formula you have to use, and we have to do it then. This you are doing the 7 marks you have to get. Inshallah. Okay. So understood or not? Take out screenshot. Chalo, next question we will go for that. Okay. Next question. Can I erase this? Yes, can I erase this? Yes or no? Yes means I'm going to erase it. Quick. Message me. Yes. Okay. Yes. We will get pass. We have to study 10 questions. Yes, definitely 100%. You are going to pass. I said you that you have to pass. You have to study these 10 questions along with your short questions also. If you are not going to study the short questions in this 2.5 unit, first unit, fifth unit, and fourth unit half, you are not going to pass. 10 questions plus short questions in that chapter. You have to follow the Karim sir notes, PDF. So what I given forwarded you class, you will get from the different notes. Which one is easy for you? Okay. Okay, chaliye. So I will going to erase this thing. So next question is your fiber drawing method. So losses in optical fiber is unimportant questions. If you go for 2 minutes, you go for any book, you 2 minutes. It's not much important. The loss in the optical fibers question. Okay. So fiber drawing method is a very important question that yesterday I given you that different types of optical fibers. Just you have follow that video, live session video. Okay. So next the fiber drawing method. I will go for the fiber drawing method. Fiber drawing method or I said you that in the class you have to follow these R. What do you have to say that? So asking that double crucible method. Double crucible method. Okay, both are same answers. Questions are same. Okay, maybe he will going to ask one question from either maybe this one numerical aperture derivation, either maybe types of optical fibers, either maybe
double crucible method, in this 300% he will going to ask the questions. 100% he will going to ask the question. Means in this 300% one will going to ask. Double crucible method, nothing is there. You type it in your Google double crucible method, you will get one PDF which is contain this diagram what I am drawing here. Okay, in that 4 or 5 points are there that you have to follow it. That's it enough. So double crucible means two crucibles. Diagram is important. Diagram everything will tell you that. So two crucibles we have. Crucible means bowl we have. I have taken one bowl. Okay, for the core. Then I am going to open it for pure material. Pure material I'm drawing. Pure material means when I'm going to fabricate it, the what is that fiber we using the glass. Suppose glass is a high quality we have, flexible glass you have, then always you are going to go for the silica oxide. So it's a very easy to fabricate here. So you require 500 600 temperature is required to go for the silica oxide glasses. Sometimes it will go for 1000 degrees temperature. Okay, so to melt the powder. Now silica oxide I am placing here that. Then another crucible I am taking. Another crucible I am taking along with this thing. Another crucible I am taking. Here I like this. So this is one more crucible, means one more ball, which is contain the cladding material. Then I am going to place out here some gap to place out the powder. So which powder I have to place out? Silica oxide with phosphate. Something dope. P2O5. Okay, lead oxide. PV lead. Okay, so this is the way we are going to pour it. Then we have to apply. We have to apply one. We have to place out this total inside the one furnace, which is contain the temperature up to 1500 degrees temperature. Up to 1500 degrees temperature. Then I'll going to close like this. The furnace, which is content furnace, I have to represent like this. The notation. Okay, that is not like this. Furnace. What is that? What you call this? Furnace. Furnace with temperature of 1500 degrees temperature. 1500 degrees centigrade. Okay. So furnace with 1500 degrees centigrade. Right. So then what is happening here? So if this chemical will going to melt, and slowly it is going to draw here. It is going to draw here. Slowly it is going to melt here. Okay. So then it is going to melt here. First it is going to melt slowly by gravity using it is going to come here. Coming here with like this. Okay. Very small, very thin, it will come here. Then it is attached with this cladding material. Okay, this is attached with. There is an ion exchange between this core and cladding. Okay, now this is a cladding material. A core material along with cladding material it will go. Cladding material it will go. Cladding material it will go. How is that? Cladding material will go. Cladding material will go like this. Core cladding combined. Simple process. Okay, that will going to take out. The core cladding will going to mix here. So it will not going to mix. Why it will not going to? So we are going to separate because core and cladding because of we are doping with the P2O5 or lead oxide something that because we have to maintain different refractive index. This is the highest refractive index. This is the less refractive index. Correct or not? Core cladding. We have taken just before core cladding materials we have seen. So that are different refractive indices. Correct or not? Core refractive index is N1 we have taken. Cladding refractive index is N2. That we have to maintain different refractive index. We have to take out these things. Then this is the silica oxide. This is your so silica with P2O5 and drawing that. Then the diameter. If you are going to observe that some places it is high, some places is the diameter of that core cladding is high you have. uh, so then we have to control by laser. Diameter we are going to control by that laser. So laser we are going to use, and so we are going to control
and heating, and we are going to control. Then we are going to, so we are going on the roller, we are going to collect this core cladding fiber. Then if you are going for the Google, you are going to find out this diagram, and you have this 10 points. You have simple words, you have to say that. Okay, 1500 degrees temperature, not a problem. Why? Because silica with, we are going to dope that P2O5, it will go for 1500 degrees centigrade. If 1200 degrees centigrade you are taking, not a problem, not a problem. Why? Because sometimes practically I have seen, why? Because I fabricated a lot of glass pieces. Some glass pieces are will going to get at 300 degrees centigrade only. It's not compulsory that, but silicon will take out high temperature. If you are doping with, doping means you are adding material, then it going to temperature is increasing, so it is not going to melt. So if powder will going to melt, this is in the form of powder, the silica and silica oxide. If you are going to powder will going to melt, molten form will going to fall here, then we have to maintain that 1500 degrees temperature. Okay, so uh, chalo, 1500 degrees and temperature, this is thing. So you have to start with that. Let us consider the, so for the core material, we have taken one crucible. So that crucible, we have to place out the silica oxide, that is called a pure material. So another crucible, we have to take out silica oxide with P2O5. Then we will get here, so cladding material, and these are placed inside the furnace. Then we are going to heat up to 1500 degrees temperature. Then core will going to fall by gravity, and along with this cladding, the core and cladding layers are going to exchange the ions. Okay, then it form like a core cladding material. So the diameter of that core cladding is going to maintain by diameter controller, that is nothing but laser. Then it is rolled on the roller. So this way we are going to fabricate the, so optical fiber. You have to write down like this 10 points you're going to available in that. Okay, so chalo, okay, fiber drawing method is over. This is a diagram only important in the fiber drawing method. Chalo, can I go for that? Next, superconductivity. Okay, take out, I'm going to take out. If you go for the Google it, and you will get that same diagram with Google. Go for that images, you will go for that same diagram with 10 points you will get on the Google only. No need to search for the notes. So already given some mechanical EC students. Okay, chalo, go for that. So I'll erase it. Can I erase? Yes means I'll go for the, so superconductivity. Okay, chalo. So I'm erasing. Chalo. The superconductors. Tell me that how many questions are there in the superconductors? Superconductors you have. What is the Meissner effect? Sometimes it is asking short question, sometimes it is asking long question. What is the Meissner superconductor? SC shortcut I am taking. Okay. First question he asking Meissner effect. Sometime so long and sometimes short question he is going to ask. Second question, what is asking? Type 1, type 2 means different types of superconductors. Give the difference between type 1 and type 2. Just large college, they got type 1, type 2 superconductors as a 6 marks question. For us, 7 marks question. Okay. So something asking, sir, notes, it's SiO2 with G2O3 is it is correct. Not a problem. G2O3 also correct. Germanium, it's not G2O3, Gi2O3, I think somebody asking that in fabrication of the cladding, SiO2, G2O3. What is the G2? Gi2, I think. Ge2, germanium oxide. Okay, no, not a problem. We'll go different dopants. We are going to use the different companies. Right, chalo. So Meissner effect, type 1, type 2 superconductor. Third question is high TC superconductors. High TC superconductors, and fourth one is BCS theory. So you have 4 questions we have. 4 questions. Maybe you'll go to ask anyone. Sometimes one question you'll learn to an easy paper you need. You have Meissner effect he'll go to ask. Otherwise, he'll ask for the short question. So sometimes these type 1, type 2 as asking a short question also. Okay, write about the 2 points about the type 1, type 2 superconductors. There are different types of superconductors. Okay.
Height is a superconductor. He'll ask BCS theory. He'll going to ask. Right clear? So BCS theory he'll going to ask these 4 questions. फटाफट will going to cover. चलो जल्दी cover करेंगे. करेंगे नहीं करेंगे? जल्दी yes बोलिए. yes बोले तो मैं आगे जाते रहता हूँ. yes we'll going to cover these things very fast. चलिए first question. first question चलिए Meissner effect first one. Meissner effect diagram देखते हैं ना और concept पकड़ना. You have to write in your own words. So revision. Okay right चलो. So Meissner effect बताने के लिए we have to draw here 2 diagrams. One is a normal material, another one is superconducting material. So I have to write here normal material, normal superconducting ring. You have to say material. You have to say conducting TING superconducting material. Okay. So when we are going to apply तो magnetic flux lines, मैंने लगा दिया magnetic flux lines for normal conductor. All the flux lines will going to enter inside the material. Then we have to say B naught is equals to 0. ये लिखना है बच्चे पूरे नहीं लिख रहे. You have to write down these things. When superconducting material is placed, then we are applying the magnetic flux lines. There is single line also will not go into enter. So this is we have observed in the Meissner effect. Meissner said that so all superconductors act as a diamagnetic material. That is a statement. What is the statement? Meissner said that all superconductors act as a diamagnetic materials. Same behavior we are going to observe in this pair. Diamagnetic materials. Diamagnetic materials. Same behavior we are going to observe. Materials. So in the diamagnetic materials, also same diagram you have. So that's why it is a superconductor act as a diamagnetic materials. We have to take out 4 steps and we have to write out D because when I corrected that Srinidhi Institute of Technology, all the students are followed my these steps. Everyone is done these things. B equals to mu naught H plus I. Then B value is 0 for that. So then I am taking 0 is equals to mu naught H plus I. Then 0 by mu naught is a 0 only. 0 is equals to H plus I. Then I have to say minus H is equals to I. Then I'm going to write it as a, so once again H I will bring here, then it will remain here. So I by H we have to write it as a chi. Chi value is a minus only for diamagnetic materials. Then by using the 4 steps, then he said that all the superconductors act as a diamagnetic material. ऐसा 4 स्टेप लिख के आप 2 डायग्राम डालेंगे तो 100% you will get here. Wait here 7 marks पूछता नहीं अभी तक 7 marks पूछा नहीं कभी भी. 4 marks or 5 marks or 2 marks. 2 marks पे भी करना है लिखना है. क्या लिखने का कुछ भी नहीं है. डायलॉग लिखे ये 2 लिखे 2 स्टेप्स लिखे खत्म हो गया ना. इजी है फटाफट लिख सकते बहुत फास्ट लिख सकते आप. ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. टेक आउट स्क्रीनशॉट. आई विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे. राइट व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? टाइप 1 टाइप 2 सुपरकंडक्टर्स. कैन आई रेज यस या चलो अभी रेज कर दे रहा हूं. चलिए टाइप 1 टाइप 2 सुपरकंडक्टर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं. टाइप 1 टाइप 2 सुपरकंडक्टर्स. टाइप 1 टाइप 2 सुपरकंडक्टर्स पता ही है आपको. टाइप 1 टाइप 2 सुपरकंडक्टर विदाउट डायग्राम लिखे तो मार्क्स चले गए आपके. ओके विदाउट डायग्राम इफ यू आर राइटिंग देन यू आर लूजिंग योर मार्क्स. बिना डायग्राम के कभी भी नहीं लिखना टाइप 1 टाइप 2 सुपरकंडक्टर्स. मैं करेक्ट करते करते अभी देखा एक बच्चे का विदाउट डायग्राम लिखा था. मैंने दे दिया 6 का 4 मार्क्स. 2 मार्क्स कट कर दिया बिना डायग्राम के. ओके चलिए टाइप 1 टाइप 2 superconductors. You have to draw the diagram first. So magnetic field versus magnetization M. Right, magnetic field versus magnetization field. थोड़ा नीचे डालिए. Magnetic field versus magnetization. Okay right. चलिए तो डायग्राम डालेंगे. इसके अंदर क्या आएंगे?
So we have only one critical field, that is called Hc. Before this Hc, it is acting as a superconductor, then it is acting as a normal conductor. It is acting as a normal conductor. चलिए इसके अंदर, so it will go like this, it will going to extend here actually, okay, Hc, but before that it will going to bring here, this point is called Hc2, this point is called Hc1, then in this, before this one it is acting as a superconductor, so after this one it is acting as a normal conductor, then in between you have mixed state, you have mixed state, that is called vertex state, mixed state, that is called vertex state. Then you write down your points by using these two diagram. The diagram is very important, you have to draw properly, ओके, ड्रा करना है, प्रॉपरली ड्रा करना है। बनाइए, अब बनाइए बनाइए, आपके पॉइंट्स बनाइए। देखिए फर्स्ट में देखिए, सो इट हैज ओनली वन क्रिटिकल फील्ड, इट हैज टू क्रिटिकल फील्ड्स, ओके। बिफोर Hc it is acting as a superconductor, after Hc it is acting as a normal conductor. So before Hc1 it is acting as a superconductor, after Hc2 it is acting as a normal conductor. There is no mixed state, there is a mixed state, okay, there is no mixed state, there is a mixed state. और ये सॉफ्ट है, हार्ड है, there is sharp critical field, there is no sharp critical field. कितने बनाया देखिए हमें, चलिए कितने बना दिया हमें, ओके। और इसका एग्जाम्पल अगर बोलना चाह रहे तो मैं एक मिनट में निकाल के देखूंगा। सो एग्जाम्पल के लिए क्या बोलना चाहिए आप, एक मिनट अभी देखूंगा। एग्जाम्पल अगर बोल रहे आप टाइप 10 टाइप 2 सुपर कंडक्टर्स का बताइए, जरा दिख रहा नहीं मेरे को। हाँ, इसमें होगा लेड, जिंक, अल्यूमिनियम, पीबी लेड, जिंक, अल्यूमिनियम एंड सो ऑन लाइक दिस। इसके अंदर क्या दिया, नियोडियम, वैंडियम, नियोबियम, वैंडियम, okay, vanadium, type 2 superconductor, vanadium, these are the examples of your type 2 superconductors. चलिए फटाफट हो गया, yes correct or not, yeah, MnGa, गैलिशियम, ओके, जो भी आया एग्जाम्पल ले लीजिए। टू बी 2 मार्क्स भी पूछ सकता है आपको, either maybe he will going to sometimes 7 marks, sometimes 4 or 5 marks। इसके हट के what is सुपर कंडक्टिविटी पूछ सकता है आपको इसके सामने। अगर he will ask the 4 marks question, this one, okay, you have 7 marks, no, 3 marks question is for what is superconductivity, तो क्या लिखेंगे भाई, what is superconductivity बोले तो the material whose resistivity is going to zero when we are going to take out lower temperatures। लोअर टेम्परेचर में अगर लेके गए कौन से मटेरियल को, then it attains the nearly zero resistivity, that type of materials is called super conducting materials, that property is called superconductivity। उसका एक ग्राफ डालना है भाई, अरे बाबा एक ग्राफ डालना है, उसके अंदर कौन सा ग्राफ डालना है, तो टेम्परेचर वर्सेस रेसिस्टिविटी, अपन डेफिनेशन बोल रहे हैं टेम्परेचर रेसिस्टिविटी का। व्हेन सो नॉर्मल कंडक्टर में अगर टेम्परेचर का डिक्रीज करे तो ऐसा ही रहेगा, जीरो को नहीं आएगा। कितना भी टेम्परेचर डिक्रीज करो तो रेसिस्टिविटी है, मतलब रेसिस्टेंस जीरो को नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे इधर ये लाइन को टच नहीं करेगा। रिवर्स देखिए, when temperature increases resistance value is increasing like this, but superconductivity में, superconductors में अगर आप देखें तो क्या होगा, when temperature is decreasing the resistance value will going to decrease, then ऐसा थोड़ा सा decrease and suddenly will going to drop down, then at this part will going to 0, okay, this is called critical temperature। so temperature इससे कम कर दी है, जैसा मर्क्यूरी, जैसा मोनस ने बताया, मर्क्यूरी कितना था वहाँ, 4.2 केल्विन, 4.2 केल्विन, ओके, क्रिटिकल टेम्परेचर करेगा। सो ये टेम्परेचर पे, मतलब ये टेम्परेचर पे लेके गए तो इन रेसिस्टेंस 0 दिखा रहा है, देखिए यहाँ पे जीरो लाइन पे दिखा रहा हूँ। तो ये डायग्राम डालना है डेफिनेशन के साथ साथ,
टेम्परेचर वर्सेस रेसिस्टिविटी का ग्राफ. ओके, करेक्ट है नॉट? यस. चलिए आगे चलेंगे. नेक्स्ट, हाई टीसी सुपर कंडक्टर्स. बोलिए फटाफट बोलिए, हाई टीसी सुपर कंडक्टर्स. हाँ, द मटेरियल्स विल शोज द हाई टेम्परेचर. मतलब 4.2 का मतलब कितना हुआ डिग्री सेंटीग्रेड में? बहुत बड़ा है डिग्री सेंटीग्रेड में. सो क्या करेंगे, -273 डिग्री सेंटीग्रेड. तो कितना आ गया, 269 समथिंग डिग्री सेंटीग्रेड. इतना बड़ा टेम्परेचर माइनस में लेके जाना बहुत बड़ी बात है. तो क्या करेंगे, और ये 4.2 को और इंक्रीज करेंगे. इंक्रीज 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 करेंगे. कितना 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 इंक्रीज करेंगे. So when the materials will going to take out or whose critical or whose transition temperature is more than according to your book 35K. पीडीएफ में 10K है, 10K मत लीजिए. करीम सर के पीडीएफ में 10K मत लीजिए, 35K. whose transition temperature is superconductors whose transition temperature is 35 more than 35K, that materials are called high TC superconductors. Simple definition. A material whose transition temperature is more than 35K. mercury कितना था, mercury का 4.2 था. ऐसा ही तो कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल, जैसे सिंगल मटेरियल से पॉसिबल नहीं है, एलॉयस ले लेना. एलॉयस ले लेना. एलॉय एलॉय बोले तो कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल्स. ओके, सेरामिक मटेरियल्स ले लीजिए आप. थोड़े सेरामिक मटेरियल्स भी है आपके पास. ओके, सेरामिक मटेरियल भी है तो अच्छे दिखाते हैं. एलॉयस ले लीजिए आप. सो एलॉयस विल गोइंग टू टेक आउट कॉम्बिनेशन ऑफ द मटेरियल यू विल टेक आउट, देन यू विल रीचिंग मोर देन 35. आजकल क्या बोल रहे हैं आप, आर बोल के लिखिए डेफिनेशन में. मोर देन 100K आल्सो वी हैव टू से इट हाई टीसी सुपरकंडक्टर्स. द मटेरियल हुज ट्रांजिशन टेम्परेचर इज मोर देन 100K टेम्परेचर. 100K ट्रांजिशन टेम्परेचर, खाली टेम्परेचर मत बोलिए. whose materials we have more than 100K temperature, that materials are called high TC superconductors. high TC superconductors. बताइए अब एग्जाम्पल बताइए. एट्रियम, बेरियम, एल्यूमिनियम, गार्नेट, सॉरी एट्रियम, बेरियम, क्यूप्रिक ऑक्साइड. क्यूप्रिक ऑक्साइड जब भी है, क्यूप्रिक ऑक्साइड फेमस हो गया. एट्रियम, बेरियम. बेरियम उठाइए, एट्रियम को रखिए, बेरियम उठाइए, स्ट्रांशियम लगा दीजिए. क्यूप्रिक ऑक्साइड में बहुत सारे हैं. मैं बोला था मैं क्लास में 3, 7 रहेंगे, मेरे ख्याल से 12 इसके अंदर, कुछ 9 कुछ रहेगा. क्यूप्रिक ऑक्साइड इज अ फेमस एंडिंग दैट. और बहुत कॉम्बिनेशन है, इंटरनेट से निकाल के रख सकते हैं, नहीं तो पीडीएफ से आप निकाल के रख सकते हैं. एग्जाम्पल 4-5 लिखना है. ओके, दिस आल्सो कॉल्ड 1, 2, 3 superconductors. Why? Because yttrium 1, barium 2, and here 3 we have. That's why it is also called 1, 2, 3 superconductors. These are famous for the fabrication of अच्छी बात है. इसके अंदर डायग्राम किधर गया सर? फिर डेफिनेशन लिख दिए, एग्जाम्पल्स लिख दिए. ओके, वी हैड सेड हियर 1, 2, 3 सुपरकंडक्टर. इसके लिए मैं यूट्यूब वीडियो बनाया था, उसके अंदर मैं इसके क्या बोलते हैं, सामने जो पिक्चर था विद डायग्राम इंटरनेट से निकाल के लिखा. तो इसका बेरियम कॉपर ऑक्साइड का जो फेमस डायग्राम है वो डायग्राम डालिए. ऐसा मेरे को याद नहीं आ रहा वो डायग्राम. तो ऐसा बना के, ऐसा स्ट्रक्चर बना के कुछ है, मैं यूट्यूब में सामने ही लगाया, देखिए यहाँ पे लगा के. सो इसके अंदर जो भी है बॉक्स बना के, इसके अंदर और बॉक्सेस बनाया. मैं कैसा बनाया याद नहीं आ रहा. हाँ हाँ, ऐसा करके बॉक्सेस बना दिया, अब याद आ रहा मेरे को. चलिए ऐसा करके बॉक्सेस बना दिया. चलिए और एक बॉक्स बना दिया, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, और इन दोनों को करते हुए. और इसके अंदर एट्रियम यहाँ पे रख दिया, बड़ा वाला एट्रियम. और ये जो भी है बेरियम लगा दिया, ये जो भी है बेरियम लगा दिया. यहाँ पे जो भी है मेरे ख्याल से ऑक्सीजन लगा दिया, ऑक्सीजन लगा दिया. 600 पे ऑक्सीजन है शायद. यहाँ पे बेरियम, एट्रियम, कुप्रिक ऑक्साइड, कापर है शायद. यहाँ पे कापर है, कापर रहते हैं ऑक्सीजन सेंटर पे रहते. कापर कॉर्नर पे है. ऐसा एक डायग्राम है, देखिए. Okay, you have to go for that. This is a famous diagram at the time of 35K. So this is the famous, sir. Okay. हाँ, ड्रा करना जरूरी है भाई. बिना डायग्राम ड्रा करे आपको
मार्क्स मिलते ही नहीं है। हाई टेंसिटी सुपर कंडक्टर्स में क्या है, 4 लाइन है, डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स है, फिर कैसे मिलेंगे आपको 4 मार्क्स को? ओके, सो इसके लिए डायग्राम ड्रा करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जरा मेरा यूट्यूब में वीडियो है, उसके अंदर डायग्राम देख के एक बार ड्रा करिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीसीएस थ्योरी, चलिए बीसीएस थ्योरी, बीसीएस थ्योरी, आखिरी वाला क्वेश्चन बीसीएस थ्योरी। चलो टेक आउट, आई विल टेक आउट बीसीएस थ्योरी, BCS theory. Chalo, erase, I will erase this thing. Last question in this chapter is BCS theory. What is the BCS theory? Bardeen. What is the BCS? B means BCS, Bardeen Cooper Sharifer. Bardeen Cooper Sharifer. Bardeen Cooper Sharifer. 3 scientist name is, we have BCS theory. BCS theory told about how you are getting the highest conduction, superconduction. He told about first point भी लिखा तो चलता. So they explained about so superconduction or superconductivity. Explained about superconduction by using Cooper pairs. Cooper pairs बना के बोल रहा हूँ. Okay, superconduction by using the Cooper pairs. Okay, चलिए Cooper pairs बनाइए, अब बताइए कैसा है, बताइए. So Cooper pairs, so ionic crystal बनाइए. डायग्राम इंपॉर्टेंट, हर बार बोला मैं डायग्राम इंपॉर्टेंट, हर बार बोला डायग्राम इंपॉर्टेंट, फिर भी पूछ रहे कमेंट में सर डालना, डायग्राम डालना इंपॉर्टेंट है क्या? क्वेश्चन मार्क. अच्छी बात है, क्वेश्चन मार्क ही रहेगा जिंदगी में. सो डायग्राम डालना इंपॉर्टेंट ही है, जितना जिंदगी में शादी करना इंपॉर्टेंट है क्या? हाँ इंपॉर्टेंट ही है. चलिए चलिए, ये था अपना आयनिक क्रिस्टल. सो इलेक्ट्रॉन पेयर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा तो डिस्टॉर्शन लैटिस होगा. डिस्टॉर्शन लैटिस वो बताना चाहिए ना, डिस्टॉर्शन लैटिस. सो यू हैव टू ड्रा लाइक दिस, डिस्टॉर्शन लैटिस. सो जब इन दोनों के बीच में फोनॉन एनर्जी एक्सचेंज करेगा, कौन सा एनर्जी? दिस इज कॉल्ड फोनॉन एनर्जी. There is an exchange of phonon energy in between the electrons. Then there is attraction between these things. Then we have to say these two electrons, so exchanging phonon. Then we have to say quantum mechanical concept है. Quantum mechanically, then we have to say these are called Cooper pairs. चलो अब स्टोरी बना के लिखिए. Let us consider the ionic crystal. Okay, generally electrons are going to repel each other. When so the electrons are coming out and then moving inside the metal, then what is happening? The electron cloud will go to enter between the two ions. So the crystal will going to distorted. Okay, the distortion between the ion, electron, then pair between the electron ion, ion electron ion, distorted ion electron ion, then it loses its energy. Whose energy? Electron energy. Then similarly opposite side, the pair between the distorted ion electron, distorted ion, then that loses the opposite electron energy. The loses energy. Okay, these two electrons then loses energy, then two electrons will going to paired by or attracted by the phonon energy. This form is called the Cooper pairs. Okay, this phonon energy. Then these Cooper pairs will going to carry the charge and very fastly moving inside the metal, and there is nearly zero resistance will show. This is given by BCS. Then the BCS said about the Cooper pairs. बस ये डायग्राम डाल के, वो डायग्राम डाल के 4 लाइन लिखी तो आपका हो गया BCS. चलो हो गया ना, हो गया नहीं? क्लियर?
आपके पास नोट्स है ऑलरेडी, बट डायग्राम नहीं है, डायग्राम डालना है कंपलसरी। ओके, कहाँ से भी देखिए डायग्राम डालिए। ओके चलो, चलेंगे, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए, आगे चलेंगे। मैग्नेटिक मटेरियल्स, एस एस बोलिए। ओके एस, तो सेड एस, देन आई विल गो फॉर दैट। आगे चलेंगे। एरेज कर दे रहा हूं मैं। कंफर्म आ रहा है सच है भाई, ये 4 में से कंफर्म आता है ना, आप कैसा बोलो मैं कंफर्म कौन सा आता बोल के। समटाइम्स ही लास्ट बीसीएस सीरीज, समटाइम हाई डीसी सुपर कंडक्टर, समटाइम टाइप 1 टाइप 2, समटाइम बिजनर इफेक्ट। 4 में कौन सा भी पूछ रहा। अब कंफर्म बोले तो मेन क्वेश्चन पेपर तो नहीं बनाया ना आपको। जाके क्या करना लॉर्ड्स कॉलेज में, नहीं तो नवाब शाह आलम में ज्वाइन हो जाना, तो क्वेश्चन पेपर भी मालूम होता, आंसर भी कौन सा लिखना कैसा लिखना भी बता देते। ओके चलिए, चलिए खाली बोल रहा हूँ। सो यू आर द गुड स्टूडेंट्स। आप जब भी पढ़ते, मेहनत करके पढ़ते, जब भी मेहनत करने वालों के लिए अच्छा रिजल्ट ही रहेगा। डोंट गो फॉर अदर थिंग्स, जो बात हम बोल रहे हैं उनके बात सुनना नहीं है। आप मेहनत करिए, 2.5 यूनिट्स अच्छा पढ़िए, सो डेफिनेटली यू विल गोइंग टू पास एंड यू विल गेट गुड कॉन्सेप्ट आल्सो। आपके पास इतने अच्छे टीचर्स है तो किस्मत वाले हैं आप। चलिए, सो राइट क्लियर। मैग्नेटिक मटेरियल्स में, सो मैग्नेटिक मटेरियल्स, मैग्नेटिक मटेरियल्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए फटाफट। मैग्नेटिक मटेरियल्स में फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन जो होगा, डोमेन थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी मैं ऐसा बताते जा रहे तो सर इंपॉर्टेंट बताइए, इंपॉर्टेंट ही बता रहा हूँ। डोमेन थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म, डोमेन थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म, डोमेन थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म, डोमेन थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, डोमेन थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म। सेकंड वाला क्वेश्चन बताइए फटाफट, डोमेन थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म। ओके, कोई बच्चा कॉल कर रहा, क्या बात है पूछेंगे। हेलो, वालेकुम सलाम। हाँ बोलिए। हाँ रहीम सर, आईएसएल से। अच्छा मैं लाइव क्लास चल रहा है बेटा, 1 मिनट, मेरा चैनल से लाइव चैनल चल रहा है। ओके रख दीजिए, बात में बात करिए। अब लाइव चैनल में आना चाह रहे तो आइए, रहीम सर जी फिजिक्स, रहीम सर जेई फिजिक्स, JEE फिजिक्स। चलो, चलिए बच्चों, इस्लाम में से कॉल है बच्चा। हाँ राइट, वेरी गुड। हाँ अच्छा, आप इस्लामी से है सर, कौन है, मैं भी इस्लामिया। ओके राइट, वेरी गुड। इस्लामिया से कोई एक बच्चा है, पता नहीं कौन है, आप बात कर लीजिए बाद में। इस्लामिया से, हाँ डोमेन थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म, डोमेन थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जरा क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। मैग्नेटिक मटेरियल्स में डोमेन थ्योरी हो गया। व्हाट आर फेराइट्स, आर वीस थ्योरी ऑफ वीस मॉलिक्यूलर फील्ड थ्योरी, वीस मॉलिक्यूलर फील्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर फील्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर फील्ड थ्योरी, वीस मॉलिक्यूलर फील्ड थ्योरी, डेफिनेटली एक आएगा। डोमेन थ्योरी और फेरोमैग्नेटिज्म और वीस मॉलिक्यूलर फील्ड थ्योरी। इसमें और एक क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर फेराइट्स, what are ferrites, what are ferrites, what are ferrites। ओके राइट, चलिए। सो राइट क्लियर। हाँ, वीस मॉलिक्यूलर फील्ड थ्योरी, डोमेन थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म एंड फेराइट्स वी हैव टू। फर्स्ट क्वेश्चन विल गो फॉर दैट। जाएंगे ना, चलिए जाएंगे, चलिए।
तीन में से एक आता, कंपल्सरी आता, आता बोल के बता रहे आता बोल के बता रहे बेटा। इसमें और एक क्वेश्चन भी है ना, डिफरेंस बिटवीन डाया पैरा फेर्रो एंटी फेर्रो, व्हाट आर एंटी फेर्रो मैग्नेटिक मटेरियल, शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपको। एंटी फेर्रो मैग्नेटिक मटेरियल, एक्सप्लेन अबाउट द पैरामैग्नेटिक मटेरियल, एक्सप्लेन अबाउट द डायामैग्नेटिक मटेरियल, 2 मार्क्स क्वेश्चन में पूछता। तो आप छोटे जब से पढ़ रहे हो उतनी बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। चलिए डोमेन थ्योरी ऑफ फेर्रोमैग्नेटिज्म चलेंगे। डोमेन थ्योरी ऑफ फेर्रोमैग्नेटिज्म, हाँ सॉफ्ट एंड मैग्नेटिक, वही समझ रहा हूँ मैं। और एक छूट गया मेरे पास बोल के देना, इसमें ही आता सॉफ्ट एंड हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। अब सेपरेट देखने की जरूरत नहीं है, फोर्थ क्वेश्चन में नहीं, इसमें सेपरेट देखेंगे। ये सॉफ्ट एंड हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का डिफरेंस जो भी है ना, ये डोमेन थ्योरी में देखेंगे। क्यों सेपरेट पढ़ना है, सेपरेट पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ओके क्लियर। सो हिस्टेरिसिस करो, यही है हिस्टेरिसिस करो, डोमेन थ्योरी ऑफ फेर्रोमैग्नेटिज्म ही हिस्टेरिसिस करो। चलो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सो डोमेन थ्योरी ऑफ फेर्रोमैग्नेटिज्म, डोमेन्स। So domains are smallest regions which is contain 10 power 21 atoms, imaginary, which is contain 10 to power of 21 atoms, smallest regions, पूरे smallest region whose magnetic moments are arranged like this. The smallest region is called a domain. ऐसा डायग्राम डालिए। अगर आपके पास इस्लाम के बच्चे भी आपके पास वो पीडीएफ फाइल आगे रहता डॉक्टर करीम अहमद का, तो जरा देख लीजिए, उसके अंदर डोमेन थ्योरी सही तरीके से एक्सप्लेन करके है। डोमेन थ्योरी ना इस्लाम में के आपके पास, हाँ गफार सर, एएसएल गफार साहब के पास भी पीडीएफ है, उसके अंदर भी आप बोल के रहते हैं आपको गफार साहब। चलिए डोमेन थ्योरी ऑफ फेर्रोमैग्नेटिज्म, डॉक्टर गफार। सो डोमेन थ्योरी ऑफ फेर्रोमैग्नेटिज्म, व्हाट अबाउट एचटीसी, आईटीसी सुपर कंडक्टर से है ना। Okay, chalo. So domain theory, domains are like this. Then I have to explain these domains using the ferromagnetic materials. Then I consider the BH curve or MH curve. So H is on the x-axis and B on the y-axis. Then we'll start with origin, and slowly when I'm going to increase this, so the magnetization will going to increase. I have to start with the domain diagram. So when at the starting point, the domains are like this. Domains are like this. Domains are at the starting point and slowly increasing like this. Slowly increasing means we are applying the magnetic field. Suppose you have this is a magnetic material. So I have, sorry, this is a metal, any metal. You have to rubbing with magnetic material like this. We are rubbing. Then what is the rubbing? We are doing like this. Okay. Then inside the electron magnetic moment is turned toward the applied field. Suppose I am applying the applied field is this side, no? Applied field is this side you have. So slowly these all are turned like that. Okay. So slowly turning. At this point, a domain look like this. All the magnetic moments are in the direction of the applied magnetic field. This point is called a saturation point. What you call saturation point? I'm writing here. This is called a saturation point. This is called saturation point. Means all the domains are oriented in the direction of the magnetic field. That is called a saturation point. Okay, right here, this concept. Okay, now. So in between, what is happening? In between, this is a very important point we have that. In between, so there is a pressure on domain walls. The slowly, immediately will not going to rotate in the direction of the applied magnetic field. साथ ही क्या करेंगे, ये जो डोमेन्स है ना, इमीडिएटली ये वॉल के ऊपर प्रेशर डालेंगे। जब क्या करेगा, इट इज अ डोमेन वॉल रोटेशन यू विल गेट हियर इन दिस पोजीशंस। सो डोमेन वॉल रोटेशन ऐसा दिखेगा आपको, डोमेन वॉल्स, थोड़ा सा डोमेन वॉल के ऊपर प्रेशर गिरेगा, थोड़ा सा रोटेशन ऐसा रहेगा। ओके, तो थोड़ी देर के बाद क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे तो डोमेन वॉल्स अपने आप अपने पोजीशन पे आ जाएंगे। सो देन so all are oriented in the same direction, so these walls are disappears. It is imaginary concept, अब दिखेगा ही नहीं ये दो वॉल। okay, it's like a single material, you have the material,
Right, clear this concept here? So you have to draw like this. When trying to take out, so it will not reaching the same path will going to reach, but it is not reaching. It will going to reach here and different path. That is called retentivity. What do you call retentivity? Because of this retentivity, it retains some value. It retains some value. This is called retentivity. 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 It retains some values. Here, see, observe that. So you have some h values. We have 0, but it retains some b value. It retains a value. H value is 0. B value is retained. So that's why it's called retentivity. Then I'm going to bring this b value 0. At this point, the h value is a negative. H value is negative. That side is positive. This side is negative. But the b value will go to 0. This property means this thing we have to raise, that is called co-erasivity. Co-erasivity. Okay, then I'm going to increase more, then I'm reaching here one saturation point. At this point, the domains are oriented in the direction of the field. Direction of the field is this side, negative side. Okay, once again I'm going to increase these retentivity is repeated. Once again co-erasivity repeated, then it will going to come to the original point. This is called hysteresis curve. What you call hysteresis curve. Explain the domain theory by using the hysteresis curve means same answer. No need to go for other things. Okay, चलिए चलिए हो गया, अभी हो गया. So I explained that. हो गया, क्वेश्चन ही हो गया. I explained that. So domain theory of ferromagnetism. Wies domain theory. Wies ही explain करा है इसके अंदर. So it is called Wies domain theory of. आप चलिए वर्ड्स में कैसा लिखना है, पहले डोमेन का डेफिनेशन लिखना है. Domain is nothing but the smallest portion of the magnetic material which is contained the dipole moments are which is contained dipole moments are 10 to the power of 21 to containing the atoms of dipole moments 10 to the power of 21 to 21 atoms. Our dipole moments are contained 10 to the power of 21. So that smallest region is called domains. The material is divided into different domains. Okay. So then we have to take out the magnetic material inside the BH loop. Then when field is 0, all the domains are oriented in different directions. When field will going to move and reaches one point, that is called saturation point. In between, there is a pressure on the domain wall. Then domain wall rotation will going to occur. So at 0, there is no domain wall rotation. At saturation point, there is no domain wall rotation. Domain wall rotation. देखिए देखिए बोल रहा हूँ मैं कुछ बना रहा हूँ, सेंटेंस बना रहा हूँ देख के. मैं कुछ भी नया क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ जो दिख रहा है उससे बना रहा हूँ मैं. So domain wall rotation will going to occur. Then we will take out the magnetic field we are taking. Then it will not going to reach here original position 0. It will going to follow the new path at this point. So the magnetic field is 0. Magnetization will going to retains. That is called, it is called retentivity. Then we have to reduce more B value. Then we have to go for the minus H value. So magnetic field is negative. Then this portion is called co-erasivity. When reduce more magnetic field, then we retain the reverse saturation point. At this point, domains are oriented in the direction of the magnetic field. Then we're going to take out in positive side. Once again, we will see here retentivity. Once again, see co-erasivity reaches one point. These will going to show the hysteresis curve of the ferromagnetic material. चलिए हो गया, मैं स्टेटमेंट बोल दिया. तो यही स्टोरी इसके अंदर नोट्स में रहता. एक बार दो बार पढ़ना, ये डायग्राम डालना, डोमेन्स डाल देना, खेल खत्म कर देना. चलिए इसको निकाल के अभी सॉफ्ट एंड हार्ड मैग्नेटिक बताइए. ओके, सॉफ्ट एंड हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल इसके अंदर ही देखिए, यही हिस्टेरेसिस कर्व यूज करके सॉफ्ट एंड हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल बनाना है. चलिए एरेज कर दो. अच्छी बात, स्क्रीनशॉट ले लिए. चलिए एरेज कर दे रहा हूँ. चलिए एरेज कर दे रहा हूँ. सॉफ्ट एंड हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का डिफरेंस ही लास्ट समटाइम्स 4 मार्क्स क्वेश्चन में पूछेंगे आपके. सॉफ्ट एंड हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स में डिफरेंस क्या है? तो आई विल गो फॉर हियर द सॉफ्ट and here we have go for the hard magnetic materials. Soft and hard magnetic materials. Okay, soft magnetic material में बोलते ही आप क्या करना,
सॉफ्ट डालना है, सॉफ्ट डालना है। चलिए सॉफ्ट डाल दिया मैं। तो इसका एरिया जो भी है पतला डालना चाहिए। सो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल बोलते ही थोड़ा क्या है, इसका मोटा कर देना, मोटा कर दिया इसको। ओके, मोटा बन गया। सो बी एच कर, राइट। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल बनाइए, पॉइंट बनाइए, पॉइंट बनाइए। डाल रहे बच्चे क्या कर रहे हैं, डाल रहे डायग्राम डाल रहे, मगर इधर है इधर बी नहीं लगा रहे। अरे भाई डायग्राम डालो, मोटा कितना, मोटा डाले पतला डाले, बी एच तो मेंटेन करो ना। एक्स एक्स में एच और वाई एक्स में बी मेंटेन करो। कर रहे नहीं, क्या करना है। ऐसे लूप्स बहुत रहेंगे। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी में भी आएगा ऐसे ऐसे लूप्स, मैग्नेटिज्म में भी आएगा। ओके, डाइलेक्ट्रिक्स में भी आएगा, डाइलेक्ट्रिक्स में अपने को आएगा बी एच करो। तो कौन सा है, तो इसके लिए वाई एक्स एंड वाई एक्सिस कंपल्सरी मेंशन करना है आप। ओके, क्लियर दिस कॉन्सेप्ट। चलिए चलो, चलिए चलिए चलिए, पॉइंट्स बनाइए, पॉइंट्स बनाइए, जल्दी जल्दी बनाइए। सो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स, एरिया इज लेस, एरिया इज लेस, एरिया इज लेस। सो इसके अंदर एरिया इज हाई, एरिया हाई, एरिया लेस मींस एनर्जी लॉस इज लेस, energy loss, energy loss is less. So energy loss is high, energy loss is, energy loss is high, high high high. And next point बोलिए, फटाफट बोलिए, नेक्स्ट बोलना है। इसको अंदर कोरिसिविटी, रिटेंटिविटी वैल्यूज आर वेरी लेस। कोरिसिविटी, कोरिसिविटी, कोरिसिविटी एंड retentivity values, retentivity values are less। यहाँ पे कोरिसिविटी एंड रिटेंटिविटी वैल्यू आर हाई, कोरिसिविटी एंड रिटेंटिविटी एंड रिटेंटिविटी एंड रिटेंटिविटी, रिटेंटिविटी वैल्यूज आर हाई, हाई आ गए। चलो यहाँ पे और क्या है, ये सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है, तो ये सॉफ्ट है ना, ये हार्ड है। सो कोरिसिविटी रिटेंटिविटी वैल्यू सॉफ्ट। ओके, सॉफ्ट। और कुछ बना सकते हैं, और बोलिए, और बोलिए, इसके अंदर कुछ बोल सकते हैं आप। एरिया हो गया, एनर्जी लॉस हो गया, कोरोसिविटी रिटेंटिविटी भी हो गई। इसके अंदर और कुछ है, हाँ। सो easy to magnetize, easy to magnetize, easy to magnetize, magnetize and easy to demagnetize। यहाँ पे very hard to magnetize, hard to magnetize, magnetize and very hard to demagnetize। हो गया फटाफट, 5 हो गए। उसके एग्जाम्पल बताइए फटाफट। मेरे पास जो भी है एग्जाम्पल्स, मेरे पास जो भी है मेरे पास क्या थे एग्जाम्पल्स, आयरन है इसके अंदर। बेस्ट एग्जाम्पल इज आयरन। सो आयरन इज द बेस्ट एग्जाम्पल। इधर जो भी है हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल में कॉपर, निकेल, काबो, कोबाल्ट, कार्बन, बहुत सारे हैं इसके अंदर कार्बन मटेरियल्स। ओके, hard magnetic materials are going to use the permanent magnets, or hard magnetic materials we have to use for the loudspeakers, examples, applications। चलिए 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 चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे। वीस मॉलिक्यूलर फील्ड थ्योरी, बच्चे पूछते रहते हैं वीस मॉलिक्यूलर फील्ड थ्योरी क्या है। वीस मॉलिक्यूलर फील्ड थ्योरी, कंफ्यूज नहीं होना, डोमेन थ्योरी या फेरोमैग्नेटिज्म। वीस डोमेन थ्योरी, डोमेन बोले तो हिस्टेरेसिस करने आना है, 20 मॉलिक्यूलर बोले तो हिस्टेरेसिस कर नहीं आता, याद करिए। चलो एरेज, कैन आई एरेज दिस थिंग, यस, ओके यस। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। 20 मॉलिक्यूलर फील्ड थ्योरी, 20 मॉलिक्यूलर फील्ड थ्योरी, 20 मॉलिक्यूलर फील्ड थ्योरी। 20 मॉलिक्यूलर फील्ड थ्योरी में क्या होगा, देर आर H is equals to, H is directly proportional to, when magnetic field is increasing, magnetization will going to increase। Okay, H is equals to gamma m, H is equals to gamma m। अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी निकाल दिया तो ग्राम, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दिया, मैग्नेटाइजेशन बढ़ रहा, वही है ना।
आप जैसा मैग्नेटिक ले लिए, आयरन पीस ले लिए, नंबर ऑफ टाइम्स रब कर रहे एक्सटर्नली, तो देखा रब करने से पूरे इलेक्ट्रॉन्स इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट फील्ड, वही देखे ना हिस्टैरिसीस करने। तो व्हेन यू आर गोइंग टू इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटाइजेशन विल गोइंग टू इंक्रीज when directly proportional to, or proportionality will take out some proportionality constant we will get. But V is बोल रहा, V is saying that not only due to the external magnetic field, due to the internal atomic molecules. मैं बेस्ट एग्जांपल बोलते रहता हूँ क्लास में, क्या है? सो आपका रिजल्ट जो भी है क्लास का रिजल्ट, सर खुद एक्सप्लेन करने से नहीं है, सर एक्सप्लेन नहीं करे इसके लिए रिजल्ट सही नहीं है, सही बराबर बताए नहीं है बाबा, आप भी हार्ड वर्क करना। तो आपके साथ ही नाइबर्स, if your neighbors are good, your result is good. If your neighbors are bad, then there is less effect of your external. So please be वही बोल रहा, there is a, if you going for the effective, okay, H external, H effective is equals to effective resultant is equals to H external plus H internal, ये बताया था आपका 20। देन इफेक्टिव रिजल्ट, आपका रिजल्ट किसके ऊपर डिपेंड होगा? सर के ऊपर डिपेंड होगा, H एक्सटर्नल एंड H इंटरनल, यू आर नाइबरिंग कोलिग्स, H इंटरनल। अब आगा ये ऊपर वाला बता दिया डायलॉग, वो इंटरनल का है। H effective is equals to H external प्लस H internal। H internal का मतलब क्या हुआ? ये ले लिया मैं इंटरनल, दैट इज नथिंग बट गामा m। कैन आई राइट इट हियर सिंपली वर्ड्स? H external E is equals to H plus गामा m। ये मैंने इक्वेशन 1 ले लिया, सिंपल वर्ड्स में समझा दिया आपको, ओके, सिंपल में बता दिया। चलिए आप क्या करेंगे इसके अंदर, ओके, पैरामैग्नेटिक इक्वेशन ले लेंगे। पैरामैग्नेटिक इक्वेशन क्या है? तो डायरेक्टली जाऊंगा मैं, m is equals to n number of molecule in the material, mu naught mu m square, बाय ऐड करिए कुछ तो भी करिए, ये हो गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये हो गया एब्सोल्यूट टेम्परेचर इनटू h है। ये कांस्टेंट जो भी है ना, ये वाला कांस्टेंट, सो इतना बड़ा कांस्टेंट आया। प्रैक्टिकली यू विल गोइंग टू ऑब्जर्व, देन यू विल गेट इट हियर लाइक दिस। ओके चलिए, अब इसके प्लेस में लगा देंगे, h के प्लेस में क्या लगा देंगे? h इफेक्टिव के प्लेस में ये पूरा वाला लगा देंगे। m is equals to, so n into mu naught mu m square by kBT, Boltzmann constant, into temperature, so h plus gamma m, okay, right, h plus gamma m। चलिए अब m वाले टर्म्स पूरे एक जगह ले लीजिए, m वाले टर्म्स मैंने ले लिया, m माइनस, सो m वाले टर्म्स अंदर ले लीजिए, और जो बढ़ाने के लिए और ले लीजिए, मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं और 2 स्टेप से एक्सटेंड कर सकते हैं आप, इसको अंदर ले लीजिए और वापस इधर लेके आइए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट ले रहा हूँ, यहाँ पे m इधर लेके आया और उसके बाद में कॉमन भी लेके आया। कॉमन भी लेके आने से मेरे को क्या मिला? सो गामा इंटू n म्यू नॉट म्यू m स्क्वायर बाई kBT into h something, this one total value n h n mu naught mu m square, नीचे लिख देता हूँ मैं, that is equals to h into n into mu naught mu m square by kBT बोल्ट्जमैन कांस्टेंट kBT। चलिए अब क्या करूंगा, h को इधर लेके आऊंगा, so m by h is equals to ओके, तो पूरा वैल्यू को उधर लेके जाइए, सो n into mu naught mu m square by kBT by 1 minus gamma into n into mu naught mu m square by kBT। अच्छा kBT कैंसिल हुआ, तो क्या बचा अपने को? ये वाला वैल्यू बच गया, दैट इज नथिंग, m by h is nothing but chi, chi is equals to n into mu naught mu m square by some 1 minus gamma into n into mu naught mu m square। ये जो भी है आपका chi is equals to c by 1 minus tc के फॉर्म में है कहते हैं। So it look like 1 is equals to c by t minus tc. It's showing that
showing that ferromagnetic behavior. Then he said that we said that so effective result is not only due to the external or inside the due to the internal neighboring atomic molecules. Okay, so then he'll get the highest magnetism by using this. He'll show this by using the 4 steps. ये 4 स्टेप लिखे वो 4 डायलॉग लिखे पीडीएफ में से हो गया आपको आ गया 7 marks और समटाइम्स 5 marks you will go to ask. चलिए लास्ट क्वेश्चन पे जाएंगे. What are ferrites? What are ferrites? फटाफट करिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट ferrites पे चले जाएंगे. हाँ चलिए हो गया ना. चलिए आगे चलेंगे. यस और नो. ferrites ferrite 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 ferrites ferrite 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 ferrites ferrites. देखिए अपना पेपर अपन बना सकते. दूसरों का पेपर का लीक हुआ क्या वो हुआ क्या ये हुआ क्या जरूरत नहीं. पूरे बातें जरूरत नहीं बच्चे. तो आप अपना बैठ के आज 2.5 यूनिट्स का क्वेश्चंस बना लीजिए. कैसा आएगा ओके पेपर कैसा आएगा बना के देखो. 1-2 बना के देखो. तो आप खुद से बनाना है ऐसा. अभी से करप्शन में नहीं जाना. करप्शन बहुत बड़ी चीज है. चलिए फेरेट्स फेरेट 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 के लिए एक अच्छा डेफिनेशन है पीडीएफ में से. करीम सर का पीडीएफ है आप सबके पास है. इस्लामिया वालों को फॉरवर्ड कर दीजिए जरा. करीम सर का पीडीएफ उसके अंदर अच्छा डेफिनेशन है. ओके व्हाट इज द डेफिनेशन? So ferrites are modified. Ferrites are modified irons. क्या डेफिनेशन? अच्छा डेफिनेशन था उसके अंदर. Modified iron which doesn't have carbon. So this type of materials are called and ferrites. So absence of magnetic field it retains magnetism. This type of materials is called ferrites. Magnetism. Okay, modified iron is called the ceramic material and modified ceramic material. Okay, so it is a ferrites are modified iron which doesn't has any carbon and which is mixed with transition metals. सर अच्छा डेफिनेशन दीजिए. ओके सो नोट्स में अच्छा मैंने डेफिनेशन है. व्हाट इज द फेराइट्स का डेफिनेशन? फेराइट क्या बोल रहा है? फेराइट्स आर मॉडिफाइड आयरन which do not have बोलो do not have any carbon and it is a mixed with 2 or 3 transition metals and that type of materials are called ferrites. When absence of the magnetic material it retains the magnetism. That type of called magnetism. Its magnetic movements are opposite but less is the magnitude. So this type of materials are called ferrites magnetic. एंटी फेरो में क्या होगा? एंटी फेरो में दोनों भी ऑपोजिट में रहेंगे और कैंसिल आउट हो जाएंगे बट इसका ससेप्टेबिलिटी पॉजिटिव रह जाएगा. और इसके अंदर क्या होगा? कैंसिल नहीं होंगे, थोड़ा रिटर्न करेंगे. वही रिटर्न फेरोमैग्नेटिक फेराइट्स में फेर्रीमैग्नेटिक मटेरियल्स के जैसा यूज करेंगे. फेर्रीमैग्नेटिक मटेरियल्स इज नथिंग बट फेराइट्स. हो गया ना. ये डेफिनेशन डाले, ये डायग्राम डाले. अभी इसका ये वाला डायग्राम डालना है ना. ओके ये वाला डायग्राम डालना है ना. सो काई वर्सेस H, right? Magnetic field versus chi. Then we have to say at exactly like a ferromagnetic material. Behavior is like a ferromagnetic material. Ferrites are behave like a ferromagnetic material. One critical temperature. Okay, magnetic field नहीं है, temperature है. चलो temperature versus chi I have to see. So at Néel temperature
So it loses its ferrimagnetic behavior, ferrimagnetic behavior slowly, and it shows as a paramagnetic behavior. That critical temperature is called a Néel temperature. क्या है ये? Néel temperature. Néel temperature. सेम बिहेवियर कहाँ पे देखेंगे आप? सो सेम बिहेवियर आप फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में देखेंगे. टी बाई टी प्लस आर माइनस थीटा, ये था फॉर्मूला आपका फेरी मैग्नेटिक मटेरियल्स का फॉर्मूला. चलिए ये चीज याद रखना है. डेफिनेशन ये वाला डायग्राम और ये थोड़ा सा लिखे, थोड़े 4 स्टेप लिखेंगे तो फेरी मैग्नेटिक का बिहेवियर. कौन सा भी नोट्स पढ़िए, इस्लामिया का नोट्स पढ़िए, करीम सर का नोट्स पीडीएफ पढ़िए, मेरा नोट्स पढ़िए, इंटरनेट का पढ़िए. ये चीज इंपॉर्टेंट है. की पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. चलिए हो गया फेरोमैग्नेटिक मटेरियल. मैग्नेटिक मटेरियल्स पूरे खत्म हो गया. सुपर कंडक्टिविटी हो गया. और देखिए 2.5 मिनट्स खत्म कर दिया मैं. ओके 2.5 यूनिट्स खत्म कर दिया अभी. राइट. फर्स्ट वाला क्या यूनिट था? सो फर्स्ट यूनिट में क्रिस्टलोग्राफी, क्रिस्टल डिफेक्ट्स. फिफ्थ यूनिट में लेजर्स, ऑप्टिकल फाइबर्स. 2 यूनिट खत्म हो गए. और फोर्थ यूनिट का हाफ पार्ट जो भी है मैग्नेटिक मटेरियल्स एंड सुपर कंडक्टिविटी कवर कर दिया. मैग्नेटिक मटेरियल सुपर कंडक्टिविटी क्लियर. 2.5 यूनिट पढ़ेंगे डेफिनेटली 100%, 110% यू आर गोइंग टू पास. दीज आर द लॉन्ग क्वेश्चंस. इसमें छोटे-छोटे बचे हुए क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस, जैसे व्हाट इज द पॉपुलेशन मोशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेजर्स में क्या है, व्हाट इज द difference between spontaneous and stimulated emission, what is the total internal reflection of optical fiber. Okay, in crystallography mein what is the space lattice, what is the unit cell, right? Clear these concepts. And what is the Bragg's law. Short questions. ये short questions पढ़ना चाहिए आप. they will be short with long मिलाएंगे. 2.5 units पढ़ेंगे तो 100% you are going to pass. सही है ना बच्चों? सही है नहीं है? सही है. 2.5 यूनिट्स टारगेट लगाइए, बैठिए, आज रात पूरा बैठिए, कल आफ्टरनून एग्जाम है आपका, तो इंशाल्लाह देखेंगे. चलिए अब डाउट्स. अब क्या है आपने सर वहाँ इंपॉर्टेंट बताइए, वहाँ इंपॉर्टेंट. इसके ऊपर वाला जरा इंपॉर्टेंट बताएंगे. इसके ऊपर वाले में डायलैक्ट्रिक्स है इसके ऊपर वाले में. कैन आई रेस एस बताइए. एस ओके. ये ऑटोमेटिक लाइव स्ट्रीम सेव हो जाता है. एस मैं ये लाइव स्ट्रीम सेव करूंगा, ऑटोमेटिक सेव हो जाता है. टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है. फिर से आप रिपीट कर सकते हैं लाइव स्ट्रीम. ओके लाइव स्ट्रीम 3 घंटे में अपलोड हो जाता है. 3 hours इट विल टेक लाइव स्ट्रीम. ओके सो मेरे ख्याल से 3 घंटे में नहीं, एक आधा घंटे में हो जाता. अच्छा 1 घंटे में, आधा घंटे में, 10 मिनट में हो जाता. स्ट्रीम लाइव सेव हो जाता. 3 घंटे नहीं लगता. चलिए इसके ऊपर वाला मतलब मैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल. ऊपर वाला में क्या है? अभी 2.5 यूनिट्स खत्म हो गए. जो भी पास होने वाले 2.5 यूनिट्स फटाफट रात पूरा बैठ के क्वेश्चंस पूरे बैठ के मैं जितने भी बनाया उतने क्वेश्चंस बैठ के अच्छा सीखिए. उसके बाद आप डायलैक्ट्रिक्स के ऊपर एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है उसके अंदर. डायलैक्ट्रिक्स में कौन सा बताइए? चलिए बताइए कौन सा है? एक डेरिवेशन है इसके अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ कितने टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन है अपने पास? 3 टाइप्स है उसके अंदर. इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन डेरिवेशन, derive the equation for electronic polarizability. ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. 100% यही पूछ रहा. आर ये नहीं पूछा तो इसमें क्या पूछने वाला है? उसने पूछने वाला है. हाँ तो ये नहीं पूछा तो और क्या पूछेगा? फ्रीक्वेंसी एंड टेम्परेचर डिपेंडेंस. dependence of frequency temperature difference of polarizations. And third वाला capacitance bridge method.
कैपेसिटेंस ब्रिज मेथड और शेयरिंग ब्रिज मेथड, दो नाम है इसके अंदर, कैपेसिटेंस ब्रिज मेथड, ब्रिज मेथड, इसका और एक नाम क्या है, शेयरिंग ब्रिज मेथड, शेयरिंग बोलेंगे RSCHERRING, शेयरिंग ब्रिज मेथड, शेयरिंग नाम है साइंटिस्ट का नाम है। 100% तीनों में एक आ गया था, 100%, देखने की बोलने की जरूरत ही नहीं है भाई, ऊपर के उसमें 3 में आता, 3 में ये वाला वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आपका, इट्स 5 स्टार रेटिंग क्वेश्चन है, 5 स्टार रेटिंग क्वेश्चन है, वो नहीं पूछा तो ये दोनों में एक पूछ देता, सही है ना। इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन, इसमें टाइप ऑफ पोलराइजेशन इंपॉर्टेंट है, ओके। सो बाकी के दो टाइप ऑफ पोलराइजेशन है नॉट इंपॉर्टेंट है, ओके। चलिए बच्चों, इसका डेरिवेशन चलेंगे क्या, कुछ करेंगे इसका डेरिवेशन, हाँ देख लेते आप YouTube पे भी है, आप देखना चाह रहे देख रहे हैं, नहीं करेंगे बोले तो करेंगे अभी। सो व्हाट योर चॉइस, यस बोलिए, करेंगे बोले तो यस बोलिए आप। सो आई विल गो फॉर दैट डेरिवेशन, सिंपल में बता देता हूँ, नहीं आप देख ले सकते यूट्यूब में बोले तो, बाकी के क्वेश्चन बता देता हूँ दूसरे, कुछ रिप्लाई नहीं दिख रहा मेरे को। सो व्हाट यू थिंक, sir derive the explanation of electronic polarization, okay, और सर सेकंड यूनिट में क्रॉनिंग पे नहीं मॉडल है बेटा, सेकंड यूनिट में क्रॉनिंग पे नहीं मॉडल एक ही है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेपर पैटर्न कुछ भी नहीं है, आपका 1 to 6 रहेगा, 6 ही है ना, 1 to 7 शॉर्ट क्वेश्चंस। सर SCIQ के लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं रहता, कहाँ से भी खींचो। मैं एक अच्छी बात बताता हूँ, SCIQ पढ़ने का तरीका बताता हूँ मैं, I'll tell you one good technique. You will go for the previous three papers. I think MJ में मैकेनिकल के पास और EC के पास प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है व्हाट्सएप ग्रुप में, ओके। आपके दोस्त है तो इस्लामिया वाले ले सकते हैं आप, उसके अंदर नहीं, इंटरनेट पे जाके देखे तो आप मिल जाता आपको, ओके। सो प्रीवियस 3 क्वेश्चन पेपर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस आप पढ़ लीजिए, और उसके हट के कुछ भी नहीं पढ़ना है, तो मिनिमम, ओके। सो कितने क्वेश्चन है अपने पैटर्न में, 1 to 10 है ना, हाँ 1 to 10 है शायद, 1 to 10 शन को 1 to 7 क्वेश्चन है अपने को, अपने पैटर्न में 1 to 7 है, 1 to 10 है, कितने क्वेश्चन है बताइए जरा, शॉर्ट क्वेश्चंस कितने हैं। अगर आप प्रीवियस पेपर्स के 3 पढ़े 1 to 7, ओके वेरी गुड, 1 to 7 आप प्रीवियस क्वेश्चंस के पूरे पढ़े तो 1 to 7 में 100% 5 तो अटेंड कर सकते हैं, 1 to 7 विल गो फॉर द शॉर्ट क्वेश्चंस, ओके। प्रीवियस 1 to 10 1 to 7 भोजन 1 to 7 ही है पापा, चेक कर लो आप, ओके। 1 to 7 प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पे गए तो देखता आपको, 1 to 7 पे आप गए तो मिनिमम अगर प्रीवियस 3 क्वेश्चन पेपर पढ़े तो 100% 5 अटेंड कर सकते हैं आप, ये एक तरीका है, क्योंकि बहुत कम टाइम है ना आपके पास। बाखरी वाले पैटर्न में तो 8th क्वेश्चन से स्टार्ट होके ए बी आ जाते हैं इसके अंदर, ए बी आर, नीचे ए बी आता, ए बी नहीं तो कभी कभी ए की पूछता, बी नहीं पूछता, दिस इज फॉर ओनली 7 मार्क्स क्वेश्चन, ओके। ये भी बना के 7 मार्क्स क्वेश्चन पूछेंगे, मर्जी अपनी, ओके। सो दिस इज द वे पैटर्न यू हैव and you have to prepare that things. If you don't get questions, you have to write another answers. अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन नहीं पता चल रहा, कंपलसरी है ना, 1 to 7 लिखना कंपलसरी है आपके लिए, तो अभी 5 आ गए, 6 7 नहीं आ रहा, उसके प्लेस में दूसरा तो लिखो,
अगर आपका पास मार्क्स नियरली पास मार्क आ गए, 28 इज अ पास मार्क, अगर 24 आ गए आपको, तो 2 मार्क्स डालने में हम अपने को कुछ तो भी मैटर होना ना क्वेश्चन के अंदर। हर क्वेश्चन को अटेंड करना। सपोज बाय मिस्टेक आउट ऑफ सिलेबस दे दिए, तो वो आपको पता ही नहीं है, तो आप कुछ तो भी नंबर डाल के कुछ तो भी आंसर लिख दिया उसके अंदर, तो 100% 2 मार्क्स मिल जाएंगे उसके अंदर। ऐसा ही लॉन्ग क्वेश्चन में 7 मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, हर क्वेश्चन अटेंड करिए। आपको वो क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर लिखिए। Sometimes we require to pass you something matter on that question. Okay, so suppose 8 ये आपको नहीं आता, बी आता, अब ये के प्लेस में सुपर कंडक्टिविटी के क्वेश्चन के प्लेस में आपको स्क्राडिंग टाइम इंडिपेंडेंट आया, इंडिपेंडेंट आता ही नहीं है, क्या करना है? तो सुपर कंडक्टिविटी आता नहीं तो ऑप्टिकल फाइबर में आता, कौन सा के क्वेश्चन भर दीजिए उसके अंदर। तो दैट इज अ वे वी हैव टू पास यू दैट वी आर गिविंग द 2 मार्क्स देके पास करने में हेल्प होगा। सही है ना? चलिए चलिए कंटिन्यू करेंगे। चलिए कंटिन्यू करेंगे, टाइम वेस्ट बहुत हो रहा, तो पढ़ने वाले पढ़ लेते बैठ के। ओके, इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन का डेरिवेशन फटाफट करेंगे। चलिए, डीईपी रिलेशन इजी है, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है डीईपी रिलेशन। चलिए, इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन फर्स्ट वाला जो भी है, इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन। इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन में क्या होगा? सो दो केस है, वन इज विथ फील्ड विदाउट फील्ड। फर्स्ट केस जो भी होगा विथ फील्ड, सेकंड वन जो भी है विदाउट फील्ड। ओके, सो मेरा ब्लू पेन किधर भी चले गया? अच्छा, यहाँ पे विथ फील्ड विदाउट फील्ड। फर्स्ट वाला जो भी होगा ये कंडीशन विथ आउट फील्ड, विदाउट फील्ड। विदाउट फील्ड में आप एटम को लेंगे तो सेंटर पे सो पॉजिटिव चार्ज रहेगा, एंड इलेक्ट्रॉन का जो सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी यहीं रहेगा, मतलब दोनों सेंटर सेम पे रहेंगे। both the centers are at then. Okay, then we have to write it here, charge density of the charged sphere, charge density of the charged sphere, charge density, density का मतलब क्या हुआ? density equals mass per unit volume। then I am saying that charge density, जो मास, यहाँ मास को डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे चार्ज को डिस्कस कर रहे थे, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज क्या है यहाँ पे? तो इसके वजह से प्लस और माइनस होगा, तो इलेक्ट्रॉन की वजह से माइनस होगा, माइनस जेड इज द चार्ज, एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब व्हेन आई टेकन एज रेडियस is I have taken radius is r, we have taken, then I consider the equation number 1। okay, चलिए, r इसके अंदर with second point, so with field, b आगे with field में, जब when you are going to apply this field to this atom, दोनों साइड क्या करिए? एक साइड पॉजिटिव लगा दीजिए, एक साइड नेगेटिव लगा दीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव, then the negative center move from here and positive center will going to move this side, then x is the distance will going to move from here to here, मतलब there is a दो स्पीयर्स के जैसा दिखेंगे। कब? जब चार्ज लगा देंगे, ये पॉजिटिव की वजह से नेगेटिव इधर शिफ्ट हो जाएगा, या नेगेटिव की वजह से पॉजिटिव उधर शिफ्ट हो जाएगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, देयर आर टू फोर्सेस आर एक्टिंग दिस थिंग। पहले क्या था? दोनों सेंटर यहाँ पे ही थे, नेगेटिव का सेंटर यहाँ ही था, पॉजिटिव का सेंटर यहाँ ही था। जब भी आप फील्ड अप्लाई करें, ये पॉजिटिव जाके यहाँ पे ठहर के इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेगा, इलेक्ट्रॉन सेंटर को, ये नेगेटिव जाके उधर बैठ के पॉजिटिव उधर खींचेगा, पॉजिटिव उधर शिफ्ट होगा, नेगेटिव उधर शिफ्ट होगा, सम एक्स डिस्टेंस। ओके, चलिए, अब क्या होगा? सो देयर आर टू फोर्सेस आर एक्टिंग, one is called Lorentz force, Lorentz force is trying to separate the things, another one is Coulomb force। अब Lorentz force का हो गया, F is equals to charge into field, F is equals to QE, पता ही है आपको, F is equals to QE पता है, charge into field,
चार्ज इनटू फील्ड। चार्ज क्या है पता है अपने को, ZE। ZE इज अ चार्ज एंड फील्ड इज इलेक्ट्रिक फील्ड, E। जब सेपरेट कर रहे हैं तो वी हैव टू राइट डाउन माइनस ZE इनटू D। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। चलिए, कुलम फोर्स ट्राइंग टू ब्रिंग एट वन सेम पोजीशन। सो कुलम फोर्स क्या कर रहा है, दोनों को एक ही जगह लेके आने के लिए कोशिश कर रहा। कुलम फोर्स एंड सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, चार्ज इनटू फील्ड। चार्ज इज ZE, फील्ड इज, अब अकॉर्डिंग टू दैट कुलम इक्वेशन पता है आपने फील्ड का, Q is Q by 4 pi epsilon naught x square। X is your radius of the new sphere। ओके, 4 pi epsilon। अब ये Q क्या है पता नहीं है अपने को। Q फाइंड आउट करने के लिए फिर इधर से आइए, चार्ज डेंसिटी। ओके, we know that। so charge density is equals to charge पर, चार्ज को Q कैपिटल Q ले लेंगे, charge per unit volume। so then what you are writing, charge equals to density into volume। अच्छी बात है, यहाँ पे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं ना। सो यहाँ पे प्लस लिखेंगे, क्यों, वो तो अट्रैक्शन है ना, ZE इंटू, सो चार्ज इंटू वॉल्यूम। तो बताइए चार्ज इंटू वॉल्यूम क्या होगा, चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। चार्ज डेंसिटी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से लिखेंगे। इक्वेशन नंबर 1 से माइनस ZE बाई 4/3 पाई आर क्यूब इंटू और क्या है, वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम क्या है, 4/3 पाई x क्यूब है, क्यों बता के रेडियस वही है ना, बाई नीचे वाला फैक्टर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर। समझ में आ गया होगा, ये स्टेप आ गया तो पूरा आ जाता। देखिए मैं क्या करा, Q ले लिया, Q यहाँ से ले लिया, Q इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। चार्ज डेंसिटी का इक्वेशन आ गया ऑलरेडी, यहाँ था अपना इक्वेशन नंबर 1। चार्ज डेंसिटी Q के प्लेस में रो इंटू वो लिखा, रो का वैल्यू यहाँ से निकाला और वॉल्यूम पता है 4/3 पाई x क्यूब। अब x स्क्वायर x क्यूब कैंसिल होगा, 4 कैंसिल होगा, पाई कैंसिल होगा और कुछ कैंसिल होगा, चेक करिए, चेक करके उसका इक्वेशन लिख दीजिए। ओके, लिख दीजिए, फटाफट लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख दीजिए, मैं यार फाइनल इक्वेशन राइट आउट किया। ओके, ZE into ZE स्क्वायर राइट। चलो फाइनल इक्वेशन लिख देंगे। सो ZE into ZE स्क्वायर माइनस ZE होल स्क्वायर। ओके, x कैंसिल होगा, x स्क्वायर कैंसिल होगा तो x बचेगा और 4/3 इधर से इधर कैंसिल होगा, 4/3 अगर कैंसिल हुआ, 4/3 पाई कैंसिल होगा तो बच गया नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बच गया यहाँ पे r क्यूब बच गया। चलिए, एट इक्विलिब्रियम सो लॉरेंज फोर्स इक्वल्स टू कूलम्ब फोर्स। चलिए, मैंने इक्वेशन नंबर 2 ले लिया, इक्वेशन नंबर 3 ले लिया। सो यहाँ से माइनस ZE इंटू E इज इक्वल्स टू, सो कूलम्ब फोर्स में माइनस ZE होल स्क्वायर इंटू x बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। ओके, तो मैं हो गया ZE और कुछ करना है, माइनस माइनस कैंसिल, देन आई विल गेट हियर, सो ZE x का ले लीजिए, x इज इक्वल्स टू, x होना चाहिए मेरे को 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब इंटू E। ओके, अपने को x नहीं चाहिए, डिस्टेंस नहीं चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन mu is equals to alpha into E। this is that you have to compare with this equation, above equation। कैसा कंपेयर करेंगे, पहले डेफिनेशन का लिखेंगे। so polarizability mu is equals to, okay, so what is that, pole strength into electric field। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, magnitude of the charge into displacement। okay, so कैसा लिखेंगे, mu is equals to magnitude of the charge
charge into field according to mu magnitude of the charge क्या है ZE into field क्या है into field नहीं into distance है। अच्छा कैसा बताया तुम देखिए, जैसा आप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लगा दिए, ओके डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लगा दिए, जनरल डेफिनेशन ऑफ यूर डाइलेक्ट्रिक्स लगा दिए, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लगा दिए, तो ये पॉजिटिव आके यहाँ पे ठहर जाएगा, ये नेगेटिव आके यहाँ पे ठहर जाएगा, दिस इज गोइंग टू स्टे हियर बिकॉज ऑफ दैट इनसाइड there is a negative charge will going to induced, there is a negative charge will going to induce, because of this negative in the dielectric material positive charge will going to induce, then we have to say it is called polarization. Okay, आपके definition induced dipole moment mu is equals to, okay so ये डिपेंड होगा आपका E पे डिपेंड होगा, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे उतना इंड्यूस होंगे चार्जेस, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। ओके सो आप कैसा बोलेंगे डेफिनेशन के हिसाब से, म्यू इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, जितना चार्ज है वो, जितना चार्ज सपोज चार्ज ई ले लिए इनटू कितना सेपरेट हो गए, जितना सेपरेट हो गए उतना आप बोलेंगे इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, राइट क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे तो म्यू बढ़ेगा, म्यू का डेफिनेशन देखें तो चार्ज सेपरेशन ओके मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इनटू सेपरेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना, कितने चार्जेस है, कितना सेपरेट हो रहा है, दैट इज नथिंग इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, दैट इज मैं वही कर रहा हूं यहाँ पे ZE इनटू यहाँ पे बोलेंगे आप x, सेपरेशन इज x, ZE इनटू x का वैल्यू यहाँ पे है ना, ये वाला लेके आके यहाँ पे लगा दीजिए, ये वाला यहाँ पे लगा दीजिए, ये वाला मैंने यहाँ पे लगा दिया तो आई विल गेट लाइक दिस, सो म्यू इज इक्वल टू ZE इंटू x का जो भी है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब इंटू ई, यहाँ पे कुछ आना है मेरे ख्याल से, x यहाँ पे ZE बच गया ना भाई, तो यहाँ पे बाई ZE आना चाहिए यहाँ पे, तो मेरे को बच गया है यहाँ पे ZE, क्यों बच गया, ZE कैंसिल हो रहा पता है मेरे को, सो आई रिमेम्बर दैट म्यू इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, अब कर करके याद हो गया मेरे को। So this you are compare with this basic equation, mu is equals to alpha e, mu is equals to alpha e के इक्वेशन को कंपेयर करिए, म्यू सेम है, ई सेम है, और इसके प्लेस में ये वाला है, सो अल्फा ई इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब इज नथिंग बट योर इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी। हो गया देखिए, देखिए मैं जितना फास्ट कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ, आप भी करना चाहिए। ओके चलिए, सो इसे उसके ऊपर इसके इंपॉर्टेंट बता दिया मैं, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंस, और आगे इसके अंदर जो भी है कैपेसिटेंस ब्रिज मेथड, दोनों भी इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंसी टेम्परेचर कैपेसिटेंस मेथड। अगर ये आया तो कल किस्मत वाले आप, फुल आउट ऑफ फुल 7 मार्क्स मिल जाएंगे। कैपेसिटेंस फ्रीक्वेंसी थोड़ा पढ़ना, डायग्राम डालिए, डायग्राम इज इम्पोर्टेंट, सो दोनों डायग्राम डाले आप, क्लियर हो जाएगा। चलिए इसके ऊपर अगर यूनिट 2 में अगर गए, क्रानिंग-पेनी मॉडल इज इम्पोर्टेंट, क्रानिंग-पेनी मॉडल इज इम्पोर्टेंट। वेव मैकेनिक्स में स्क्रॉडिंजर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन और पार्टिकल इन पोटेंशियल बॉक्स, इन दोनों में पक्का एक आ जाएगा, स्क्रॉडिंजर टाइम इंडिपेंडेंट, पार्टिकल इन पोटेंशियल बॉक्स। मैंने 2 वीडियो बनाए थे, आप वीडियो खोल के देखिए यूट्यूब पे, स्क्रॉडिंजर टाइम इंडिपेंडेंट, पार्टिकल इन पोटेंशियल बॉक्स, और नीचे आए तो मैक्सवेल इक्वेशन का डेरिवेशन और पॉइंटिंग वेक्टर, इन दोनों में पक्का एक आता, मैक्सवेल इक्वेशन के डेरिवेशंस एंड पॉइंटिंग वेक्टर, इनका भी वीडियो बनाया, बैठ के देख लीजिए। चलिए अभी ऊपर जो ऊपर क्वेश्चंस 2.5 यूनिट पक्का पढ़ने के बाद ऊपर क्वेश्चन पढ़ने का तरीका है। ओके ऊपर क्वेश्चन बोले तो पहले क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन का डेरिवेशन सीखना है, उसके बाद आगे जाके पॉइंटिंग वेक्टर सीखना है, उसके सामने आगे जाके मैक्सवेल इक्वेशन सीखना है, यू हैव टू स्टडी, एंड उसके थोड़ा सा आगे जाके आपका जो भी है स्क्रॉडिंजर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन सीखना, उसका थोड़े आगे जाके सो पार्टिकल इन पोटेंशियल बॉक्स सीखना, उसका थोड़े आगे जाके क्रानिंग-पेनी मॉडल सीख जाना। 6 क्वेश्चंस ऊपर 2.5 यूनिट जो पास से ऊपर आना चाहिए मार्क्स, उनके लिए बता रहा हूँ, ये 6 क्वेश्चंस पक्का कर लीजिए, 6 क्वेश्चंस पक्का कर लेना है 2.5 यूनिट्स के बाद।
उसके बाद में बाकी वाले इसके दूसरे दो फ्रीक्वेंसी टाइम डिपेंडेंट, और वो दूसरा और एक क्वेश्चन पॉइंटिंग वेक्टर, सॉरी ये कैपेसिटेंस ब्रिज मेथड, ऐसा ही दूसरे चैप्टर्स में दूसरे सो अनइम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लीजिए। चलिए हो गया ना, देख लेंगे ना, फिर और कुछ डाउट बताइए, और कुछ डाउट्स मैसेज नहीं, क्लोज कर देंगे लाइव चार्ट को, अब बैठ के पढ़ते रहिए। और कुछ है सर? पोटेंशियल बॉक्स एक्सप्लेन, पोटेंशियल बॉक्स एक्सप्लेन बोल रहे हैं, हाँ सर। व्हाट अबाउट दी हॉल इफेक्ट? हाँ हॉल इफेक्ट भी है, सही है, सेमीकंडक्टर्स में हॉल इफेक्ट है, वही बोल रहा हूँ। यूनिट 2 में क्रॉनिक पेनी मॉडल के साथ साथ सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का एक क्वेश्चन और हॉल इफेक्ट का एक क्वेश्चन। ओके, तो थोड़ा आप पढ़ना शुरू करें तो हर चीज इंपॉर्टेंट ही दिखेगा। तो मैं बोला पहले थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लीजिए, जितना टाइम है उतना कर लीजिए। उसके ऊपर आप हॉल इफेक्ट पढ़ना चाह रहे हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का 4 स्टेप का डेरिवेशन है पढ़ना चाह रहे, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन पढ़ना चाह रहे, और सेमीकंडक्टर में कंडक्शन का इक्वेशन करना चाह रहे, कर सकते हैं आप। 1 साल का 1 दिन में पढ़ना बोले तो नहीं होता ना भाई, देख के संभाल के पढ़िए। और कुछ? सर ऑल क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम सिलेबस ओनली, सिलेबस ओनली में, हाँ सिलेबस में ही आते, और क्या है इम्पोर्टेंट वंस। 2.5 यूनिट में हर चीज पढ़ना है भाई। फिर से इम्पोर्टेंट बताऊं? हाँ चलिए, यूनिट 2 में से क्रॉनिक पेनी मॉडल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्रॉनिक पेनी मॉडल कुछ भी नहीं है, 2 डायग्राम है क्रॉनिक पेनी मॉडल में, पता है आपको? 2 डायग्राम, एक बॉक्स का रहा है, एक ग्राफ का, 2 डायग्राम डालना है। उसमें से सेकंड पार्ट जो भी है आपका हॉल इफेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट, यूनिट 3 में से स्क्रॉडिंजर टाइम इंडिपेंडेंट पार्टिकल इन पोटेंशियल बॉक्स इंपॉर्टेंट है। उसके नीचे वाला पार्ट में डायरेक्ट्रिक्स है, ये वाला क्वेश्चन है। और कुछ है ईएम थ्योरी में मैक्सवेल इक्वेशंस और पॉइंटिंग वेक्टर, सही है ना? हाँ खत्म, यही है इम्पोर्टेंट। बाकी के 2.5 यूनिट पक्का तो पढ़ना है पास होने के लिए। यूट्यूब के बारे में आप इंकरेज करेंगे तो कुछ तो मिलेगा, आप अभी तक तो मिला ही मिला। यूट्यूब का कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बाद में डिस्कस करेंगे, पहले अपना अपना कंसंट्रेट करिए। सर प्लीज 2 यूनिट का है, कौन से पढ़ना 28 मिनट्स के लिए? 2.5 यूनिट्स बाबा, 2 यूनिट्स के लिए। सेकंड यूनिट में कौन सा पढ़ना? सेकंड यूनिट में वही बोला ना, क्रॉनिक पेनी मॉडल और हॉल इफेक्ट पढ़ लीजिए। पाउडर डिफ्रैक्शन मेथड, हाँ ऊपर में पाउडर डिफ्रैक्शन मेथड 2.5 यूनिट्स में आ जाएंगे ना। पाउडर, सो पाउडर डिफ्रैक्शन मेथड, क्रिस्टलोग्राफी एंड क्रिस्टल डिफेक्ट्स, लेजर ऑप्टिकल फाइबर, मैग्नेटिक मटेरियल सुपर कंडक्टिविटी, ये चैप्टर जो भी है 2.5 यूनिट्स में आ जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन वो पीडीएफ आप भेजे सो है, हाँ शॉर्ट क्वेश्चन मैं 15 क्वेश्चंस भेजा था, जो बच्चे इस्लामिया के भी है वो ले सकते हैं आप। 15 क्वेश्चन, शॉर्ट 15, लॉन्ग 15, वो पढ़े तो भी बाकी है, अच्छे अच्छे मार्क्स आएंगे, 80% मार्क्स आ जाएंगे। क्रॉनिक पेनी मॉडल ब्रीफली बताने के लिए टाइम नहीं है अपने पास, बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं पढ़िए, जो पढ़ना चाह रहे हैं पढ़िए, मगर 2 डायग्राम डाल के बता देता हूँ क्रॉनिक पेनी मॉडल में। ओके, 2 डायग्राम डाल के बताना चाह रहा हूँ, वो इक्वेशन में बताना चाह रहा हूँ आपको क्रॉनिक पेनी मॉडल का। ओके, फर्स्ट जो की पॉइंट है आपका, फर्स्ट डायग्राम, एक मिनट इक्वेशन एक बार देखने दीजिए क्रॉनिक पेनी मॉडल का, एक मिनट अभी निकाल रहा हूँ। क्रॉनिक पेनी मॉडल का 2 डायग्राम और एक इक्वेशन, सो दिस ये 3 इंपॉर्टेंट है, आप जो भी लिखिए तुम्हारा मर्जी, आप जो भी स्टोरी, सिनेमा स्टोरी, शाहरुख खान का लिखो, आमिर खान का लिखो, कौन सा भी लिखो भाई, आप जो भी है क्रॉनिक पेनी मॉडल का डायग्राम डालना है। अभी निकाल रहा हूँ, बुक मेरे पास ही है, एक मिनट एक मिनट, एक मिनट, अभी क्वेश्चन याद नहीं आ रहा मेरे को।
सो डायग्राम तो बताऊंगा। किधर गया अभी पानी पीने मॉडल कौन सा चैप्टर में है? और कुछ रनिंग पेनी मॉडल किधर गया भाई? दिख रहा है? मेरे को दिख रहा है। आप एक काम करिए, मैं डायग्राम डालते रहता हूँ जब तक आप इक्वेशन बोलते जाइए मेरे को। ओके, मेरे को दिख रहा नहीं बुक में। हाँ क्या है, आप पूछना शुरू करते ना, एकदम दिखता नहीं हो। ओके, मैं डायग्राम डालते चलता हूँ, आप चलिए वो इक्वेशन बताते जाइए। सो फर्स्ट डायग्राम इज वेयर यू हैव द diagram like a block diagram, block BLOCH साइंटिस्ट का नाम है। ब्लॉक डायग्राम, ब्लॉक नहीं दिया था, ब्लॉच बोलते थे। ये ब्लॉक बोले तो अलग स्पेलिंग आता तो ब्लॉच बोलते। तो यहाँ पे जब भी आपका प्लस 2 आयन के पास इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसका एनर्जी कम हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी, और एक पॉजिटिव पोटेंशियल के पास ज्यादा हो जाएगा इन बिटवीन, फिर से इन बिटवीन ज्यादा होगा, फिर से और एक आयन के पास इसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा कम होगा, फिर इन दोनों के बीच में ज्यादा होगा। ये ब्लॉक डायग्राम कंपल्सरी डालना है। इसके नीचे सो ही क्रॉनिंग इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस। देखिए इन्होंने ऐसा बताया था, रेक्टेंगुलर बॉक्सेस। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव आयन, यहाँ पे पॉजिटिव आयन, यहाँ पे पॉजिटिव आयन, देन the electron will going to move like this, electron will going to move like this, electron। तो यहाँ पे इसका पोटेंशियल जीरो होगा, यहाँ पे पोटेंशियल मैक्सिमम होगा, यहाँ पे पोटेंशियल जीरो होगा, यहाँ पे पोटेंशियल मैक्सिमम। ये डायग्राम कंपल्सरी डालना है। यहाँ पे पोटेंशियल जीरो होगा, यहाँ पे पोटेंशियल, ये था क्रॉनिंग पेनी क्रॉनिंग। इसके मॉडल को चेंज कर दिया, he changed this क्रॉनिंग ब्लॉक डायग्राम। ओके, सो ब्लॉक डायग्राम चेंज कर दिए। कहाँ से भी एक रेफरेंस पॉइंट ले लीजिए। मैंने सपोज यहाँ से एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया तो आई कंसिडर एज दिस जीरो। हियर टू हियर बॉक्स डिस्टेंस विड्थ इज ए, हियर टू हियर डिस्टेंस इज बी। ओके, अगर ए वाला पार्ट ये रिपीटेड हुआ, फिर ये रिपीट हुआ, फिर बी रिपीट हो गया, यहाँ से यहाँ बी रिपीट हो गया, फिर ये रिपीट हो गया, फिर इधर देखा तो जीरो से माइनस बी होगा। अगर यहाँ पे लिए तो आप ओके, यहाँ से लिए तो माइनस ये होगा। सही है ना? रेफरेंस पॉइंट किधर भी ले सकते हैं। अगर अपने बुक्स में यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट रहता कोई बात नहीं है, दिखाना चाह रहे हो। ओके, जीरो ए जीरो बी कहाँ से भी ले लो आप। चलिए, तो इसके लिए ब्लॉक क्या करें, एक इक्वेशन ले दिए, साई ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या था ये, क्या था भूल गया, यही भूल गया मैं। साई ऑफ एक्स इक्वल्स टू ब्लॉक एक इक्वेशन दिए थे। तो फाइनली वी विल टेक आउट फॉर रीजन 1 एंड रीजन 2। सो रीजन 1 में स्क्वायरिंग द टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन अप्लाई करेंगे। सो दो स्क्वायर साई बाय दो एक्स स्क्वायर प्लस 2m by h bar स्क्वायर माइनस e माइनस v इंटू साई इज इक्वल टू 0। चलो रीजन 1 रीजन 2 ले लीजिए। कौन सा भी रीजन 1, रीजन 1 यहाँ पे ले लिया, रीजन 2 यहाँ पे ले लिए। ओके, रीजन 1 में इसको पोटेंशियल जीरो, तो एक इक्वेशन आएगा, उसको ब्लॉक का इक्वेशन बोलेंगे। रीजन 2 में इसको पोटेंशियल वी नॉट लगा दीजिए, उसका इक्वेशन 2 लगा दीजिए। दो इक्वेशन आ गए। तो इसको डिफरेंशिएट करके ये ब्लॉक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो विल गेट फाइनल इक्वेशन। वो अपने डेरिवेशन में नहीं है, खाली ये दोनों इक्वेशन लिखना। पहला वाला इक्वेशन रीजन 1 के लिए, और रीजन 1 के लिए मतलब यहाँ पे ये रीजन 1 के लिए आपका जो पोटेंशियल जो भी है जीरो हो गया, तो ऐसा लिखेंगे आप दो स्क्वायर साई पे दो एक्स स्क्वायर। सो एक ही डायरेक्शन में जा रहा ना, इसके लिए वन डायमेंशनल मैंने ले लिया। 2m by h bar स्क्वायर, सो ई साई इज इक्वल टू 0। तो इसको बोलेंगे आप अल्फा स्क्वायर। इट लुक लाइक ए वेव इक्वेशन, तो मैं लिख दिया वो, थोड़ा सा ऊपर अरेंज कर दूंगा। ओके, सो ऊपर अरेंज कर दूंगा।
मैं लिख दिया वो वाला इक्वेशन, डो स्क्वायर साई बाई डो एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू साई इज इक्वल टू 0। ये था आपका इक्वेशन नंबर 2। वाई बिकॉज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। कुछ था यहाँ पे, साई इज इक्वल टू साई ऑफ एक्स प्लस ये कुछ है। ओके, ये वाला इक्वेशन में आप नेक्स्ट रीजन टू के लिए I have taken dou स्क्वायर साई बाई डो एक्स स्क्वायर प्लस इसके अंदर क्या करना, वी नॉट लगा दीजिए 2m बाई एच बार स्क्वायर, सो ई माइनस वी नॉट इंटू साई इज इक्वल टू 0, then this will consider as beta square, then it look like a differential form of wave equation. So differential form of wave equation, dou square psi by beta square into psi is equals to 0. This is equation number 3. These two are differentiate and equate to equation, substitute in the equation number 1. We will get final equation. That final equation is very important. Screenshot ले लीजिए, final equation लिख देता हूँ फटाफट से, screenshot ले लीजिए। मैं चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं ले लेता हूँ। चलिए इरेज कर दूँ, इरेज करो, इसे इरेज कर दे रहा हूँ। चलिए ले लिए आप स्क्रीनशॉट, पीछे करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, बाद में भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फाइनल इक्वेशन आएगा आपको पी इंटू पी स्कैटरिंग पावर साइन अल्फा ए बाई अल्फा ए प्लस कास के इज इक्वल टू कास अल्फा इज इक्वल टू कास अल्फा इज इक्वल टू कास अल्फा ए। ओके, इसका जो डायग्राम होगा, so I will get the diagram like a alpha a is this side, the limits of cos are like this, plus 1 to minus 1 plus 1 to minus 1 plus 1 to minus 1, then you will get a graph like this, then you will get graph like this, then you will get graph like this. You have to draw, जहाँ पे भी एलोड रीजन होगा आपका, ये एलोड रीजन है, ये नॉट एलोड रीजन है, ये एलोड रीजन है, नॉट एलोड रीजन, ये एलोड रीजन है, ये जो पीक बाहर आ रहा ना, ये नॉट एलोड रीजन है, नॉट एलोड रीजन, ये एलोड रीजन है, ये आपका एलोड रीजन है, ये आपका एलोड रीजन। एवरी टाइम एलोड रीजन इज इंक्रीजिंग, एवरी टाइम एलोड रीजन इज इंक्रीजिंग, देन बैंड गैप इज डिक्रीजिंग, एलोड रीजन इज इंक्रीजिंग, ऐसा करना चाहिए, एलोड रीजन इज इंक्रीजिंग, केयरफुली करना। ये इधर जो भी है, ये वाला ऊपर इक्वेशन एक ही रहेगा, एक्स एक्स में अल्फा ये रहेगा, when p tends to infinity, then what is happening, there is only all the bands are going to press and only look like a one p tends to 0 होगा तो क्या होगा, आपका पूरे बैंड्स दिखेंगे, पूरा बैंड्स, there is no band gap। तो ये है इंपॉर्टेंट वेरी की पॉइंट्स इन द क्रॉनिक पेंडिंग मॉडल। चलिए हर वीडियो में बना के डाल दिया, आप केयरफुली बैठ के पढ़िए, जो स्कोर करने वाले चाहिए, आप पूरे नहीं बता सकता मैं ऑनलाइन क्लास में, लाइव क्लास में थक गया अभी। चलिए बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह वी विल सी विद गुड रिजल्ट। सो जो डर रहे सर पास होते नहीं होते, पर होते कंपल्सरी, कीप इट योर कॉन्फिडेंस and study 2.5 units, definitely 100% you are going to pass। okay, चलिए मिलेंगे तुम्हारे आपके रिजल्ट के बाद में, देखेंगे रिजल्ट्स। ओके चलिए, और कुछ डाउट है तो मेरे को मैसेज कर सकते हैं पर्सनली यू आर गोइंग टू मैसेज ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, आई विल गोइंग टू रिप्लाई, थोड़ा लेट हुए तो भी रिप्लाई करूंगा देख के। ओके।